Hello students, good evening. ପିଲାମାନେ, Good evening, madam. good evening. ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି Good ତ evening, ସବୁ ma'am. active? Good evening. Madam, good morning. Good evening, madam. Good evening, good evening. ଚାଲନ୍ତୁ. Good evening all of you. Let's start. Start କଲେ ଗୋଟେ minute. Wait a moment. ଆଚ୍ଛା. Students, see. This is your syllabus. ठीक है? As per your syllabus, ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? Slide? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର page ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? Yes, Yes, ma'am. sir. Yes, Okay, madam. see. This is your syllabus. As per your syllabus, we have completed your block 1. Block 1, it covered aquatic disaster, though already we have completed. Under the aquatic disaster, we have completed many things, right? Aquatic disaster, aquatic disaster under कौन complete कले पिलामाने? What we have completed aquatic disaster? Cyclone, flood, Aquatic disaster. साइक्लोन ता आसीबो आपनकर कहंडरे कहले क्लाइमेटिक डिजास्टर एटमॉस्फेरिक डिजास्टर हैला जोटा कि आसीबो साइक्लोन aquatic disaster we have धरंतु आपनकर क्वेश्चन आसला at the time of examination the question will come what do you mean by disaster and briefly explain the different types of aquatic disaster तो कौन करिवे disaster कौन लिखिबे and also explain the its causes and effects हैला एमती आसला तो आपण कौन करिवे what do you mean by disaster then you have to explain the things related to aquatic disaster it covers तीनटा cover होची floods tsunami and tidal wave जोटा कि already we have completed geographical disaster already we have completed geographical disaster also we can call as a terrestrial disaster also we can call as a land movement disaster जोटा कि कौन कवर कला में चारिटा बड़ बड़ डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर इट लीड्स टू avalanches earthquake landslide and volcanic eruption complete करिचे climatic disaster having many disaster under climatic disaster हैला जेमति कि it relates to आमे जोटा कि गोटे काली लास्ट क्लास काली डिस्कशन करथिले जोटा कि बहुत कंफ्यूजन सहित कोन ना हीट वेव एंड कोल्ड वेव अपार्ट फ्रॉम दिस साइक्लोन ड्रॉट्स जोटा कि आमे डिस्कशन करिचे कंप्लीट करिचे हीट वेव कोल्ड वेव साइक्लोन ड्रॉट्स हैला आ भितरे तो बहुत सारा अछि जेमति कि लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म ए सब अछि किंतु द मेजर पार्ट ऑफ द आमे कहबा कि क्लाइमेटिक डिजास्टर इट रिलेट्स टू आमे जोटा कि डिस्कशन करचे जोटा कि नेचुरल डिजास्टर जोटा कि हाईली अफेक्टेड नो डिजास्टर सेटा हला ड्रॉट साइक्लोन एंड आमे डिस्कशन करचे हीट वेव एंड कोल्ड वेव हैला ता छडा अछि आपनकर जेमति कि आमे कहिबा लाइटनिंग हला थंडरस्टॉर्म हला हिल स्टॉर्म हला देन ब्लिजर्स ए सब तारो भीतर अछि बट एति कि हम आ भीतर कवर करिबा ता छडा वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द ग्लोबल वार्मिंग आर सब आगर जेमति कि एक्वाटिक डिजास्टर geographical disaster climatic disaster ए सबुर हमें causes effects and solution complete करिचे then after also we have completed global warming what are the causes effect and the solutions जोटा कि solutions are through Kyoto protocol adopted by the globe and basing on this adopted many rules regulation guidelines towards the universe हमें ताको discussion करिचे man made disasters जोटा कि आपनकर अछि block 2 रे already we have completed it relates to nuclear disaster with case studies already I have completed chemical disaster and biological disaster with case studies already we have completed buildings coal and oil fire I'm a discussion kale what is the causes of building fire coal fire and oil fire and what how it affect after effect no towards the society जेमति कि coal fire and oil fire केते हजार्स माने केते अफेक्ट करूची सोसाइटी को बिल्डिंग फायर केमिति लोक माने केते अफेक्ट करूची माने लोकन को ह्यूमन एंड अदर एरिया सेटा हम ऑलरेडी डिस्कशन करिचे कॉजेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ फायर केते केते फायर अछि हमर जोटा कि केते वैरायटी रे अछि तार केते सॉल्यूशन अछि ताको मैनेज करबा पाए apart from this we have also discussed variety kind of pollutions it relates to water pollution air pollution soil pollution and industrial pollution causes effects and its solutions already we have discussed
yesterday we have discussed deforestation gote chapter ame kali discussion kariche. What are the causes of deforestation, effects of deforestation, and what are the steps we have to take so that we can minimize this kind of situation. ताको काली discussion करि सारछे हैला. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ 2 ରେ जोटा कि अछि आ गोटे जिंस जोटा एइना जस्ट आमे फर्स्ट वी विल कवर दिस. आमे जानिचे सब स्टिल मु टिके टिके कहि देबी आपण माने फर्स्ट एडी कहिबे. देन आमे जिबा थर्ड ब्लॉक को जोटा कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस. फर्स्ट आसला आपनकर ब्लॉक 1 already we have completed four unit. Block 2 it relative 4 unit we have completed, and then we will go to the block 3 हैला. Before that block 3 we will discuss these are the different kind of accidents. The accidents related to कौन cover करिबा. Road accident, rail accident, air accident, and water accident जोटा कि हम sea accident कहूचे. What are the causes of this accident and what are the solution for this? Are causes कौन और solution कौन? पिला माने accident generally कौन? What do you mean by accident first कहंतु. आउ आमे जदी कहिबा road accident कौन पई होची कहले फटाफट कहिबे. What are the causes of road accident? एटा खाली एटा Speeding एथिरे आउ vehicle. किछ. Speedy vehicle, very good. आउ Human error or सेटा तो ह्यूमन एरर ही. Disturbing सुनंतु bad सेटा तो bad road bad condition road is bad. bad road condition, speed driving, very good. आउ disobeying traffic rule. Not following traffic rules. not following the traffic rules. हेलमेट पिंधिबेनी, रॉन्ग रूट रे जिबे, 5 जन को धरि कि जिबे हैला. बस very good. आउ मैडम गोटे अच्छी एक्सीडेंट प्रोन जोन गोटे अच्छी अच्छा तापरे सेडी मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए. अच्छा एक्सीडेंट जोन जेमति कि सेते मैक्सिमम एक्सीडेंट हो. सेटा हमर भी टिके नेग्लिजेंस रे ही हुए जनरल एक्सीडेंट ता. सुनंतु एटा तो पूरा ह्यूमन एरर. आपणकर ड्रंक एंड ड्राइव ता गोटे कजेस नो. ड्रंक एंड ड्राइव वाला सब मेजर कॉज फास्ट कॉज रे जीव ड्रंक एंड ड्राइव मेजर कॉज से तो मरिबो साथरे आउ जो लोक माने माने कोन कहले इनोसेंट लोक भी सेठी मरिबो हैला. तो पिला माने एटा हमें सब जानिचे. आर किछि स्लाइड नै सब हमें जानिचे. म खाली एटा कहि दोछि आपण माने भी जानचंती. खाली सुनि दियंतु आकु से अनुसार लेखिबे. आरो किछि ये नै कोन जदि हम एक्सीडेंट कहबा जनरली रोड एक्सीडेंट केते बेले हुए. रोड एक्सीडेंट occur when one vehicle गोटिए vehicle it hit with or collide with. हम जोरा collides कहूचे और hit कहंतु अपन जहा कहंतु hit with another vehicle. जेमति कि काली नै पोर दिन संडे दिन हैला. संडे दिन मु हमरो ये नीट एग्जाम थिला. नीट एग्जाम को बाहरी की मु आसिला बेलू 5टा बेला. मो नीट एग्जाम सरला 5टा बेले डीडीसी रो 5टा बेले बाहरी के आसिला बेलू पूरा रोड ओवरफ्लो होची जाम रे. कोठू ना सत्संग बिहार टू रोड ओवरफ्लो होची जाम रे. मो जेमति दूररु देखिली मो कहली अरे काहे भिड भितर पसिबी कोन गोटे हेइथिबो. तो मु ता सेटू फ्रूट्स मार्केट पटे सत्संग बिहार तळ पटे बुली की शहीद नगर पटे एमते बुली की आसिली. आसी की टीवी ऑन कला बेलू हम जो सत्संग बिहार टू ए जो ये कौन कहले जो फ्लाईओवर अच्छी जोटा कि हम रेलवे लाइन टा अच्छी से भितरे मो बस पिट देछि बाइक वाला को आउ ताको पूरा बाइक वाला रो पूरा डेथ हो जाइछि. पूरा ये कर देछि. तेरे जनरली कोन हैला ताको पछाड़ बाइक वाला को बाडेला. तो जनरली हम एक्सीडेंट्स कहबा व्हेन it occur while one vehicle hit with another vehicle. से vehicle ता ए vehicle को hit कला कोन मन को accident हबो की. No, one vehicle hit or collides with another vehicle or the vehicle collides with tree. गछ चेकी बाडे हबो. or it may be electric pole रे बाडे हबो. or it may be divider रे चेकी बाडे हबो. or it may be wall रे चेकी बाडे हबो. कंथरे चेकी बाडे हबो. कोठी तो चेकी बाडे हबो ना. एमती तो खाली तो एक्सीडेंट हबोनी राइट. जदि हमें कहबा जनरली रोड एक्सीडेंट्स while one vehicle collide with all those factors जोटा जोटा म आपनकर कहली राइट.
So that leads to accident, and it basically after the situation कौन हुए, death, injury kind of things happen. So what are the causes, काहींकी हुए मा, already आपण माने कहिले the major causes ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆର କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏଇଥିରେ କଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବନେଇବେ, ଏଟା ତ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା. The major causes of this accident, the first and most causes of accident, road accident is taking alcohol, influence of alcohol, and we can say as a drunken drive situation. जोटी drunken drive situation हैला, ସେଇଠି हबार chances, accident हबार chances बहुत अधिक, and सेटा हैला fast cause, जोटा कि गवर्नमेंट सब बेले अवेयर करे, डोंट, जोटा कि तापा मशीन आसी टेस्टिंग करे, ट्रक ड्राइवर माने समाने तो ड्रंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट करती, साथरे बाइक वाला को, कार वाला, ये वाला समस्त को मारती, राइट. सो दिस इज द मेजर कॉज. सेकंड जदि हम कॉज कहबा, ड्यू टू ओवर स्पीड, नो आपण एने जस्ट आपण कहले व्हीकल ओवर स्पीड, जो भी व्हीकल हो जदि ओवर स्पीड हो, हमें कौन कहू, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज. जदि हमें कौन करिबा, लेट हो बट लेट न हो, टिके हमें लेट रे पहुंचबा बट हमर नेम आगे लेट न लागो, हैला, लेट ही जाओ, तो हम एठी कौन करछि, ओवर स्पीड ड्राइविंग करछि को जल्दी पहुंचबा पाई बोली, राइट. थर्ड कंडीशन जदि हमें कहबा, ड्यू टू वेदर कंडीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसिफिकली इन द फॉगी वेदर, जेतले हमें कहबा कोन कहले in the month of winter season रे, rainy season रे heavy rain होतबो, किंतु आपण कहतिबे हां पळैबे नि कि, हैला, पूरा फॉग हे कि देखा जाय नथबो, हां आपण कहबे हां चलो कोन हे छिबो कि କିଛି ହବନି ମ ଚାଲ. ତ ଏଇ ଯୋଉ bad weather in the case of foggy weather, or we can say the heavy rain kind of situation will be there, and at that particular situation the accident may be happen. Apart from this, how कौन ही परिबो ना, due to आपण कौन करिवे कहले, due to stress. आपण जदि किछि स्ट्रेस नै कि गाड़ी ड्राइविंग करचंती, हां माने आपणकर कौन कहले, जनरली गाड़ी ड्राइव करिबारे आपणकर माइंड माने कौन कहले, basically you are not concentrating towards driving, or it may be some kind of you are facing some kind of stress, some kind of anxiety, some kind of problem, this kind of situation you are facing, no, frustration heiki achanti, upset heiki achanti, it may be angry or it may be stress. In such kind of situation apankara mind ta kon thibe, you are basically completely not concentrating towards driving, your mind is something somewhere else. So at that situation also most of the time सेतमे हमें कौन कहूचे, ड्राइव कला शांत मन, धीर मन, कान रे खेंची देथिबे, पछरे हॉर्न मारथु, सुभा जाउ नथु, एटा भारी खराब जिंस. हां तो ए गवर्नमेंट कहूची कि आपनकर ड्राइव कला जनरली आपण यू कैन नॉट यूज मोबाइल फोन, यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. से काहे कि अवेयर करची, कोन सेतरे गवर्नमेंट रा लाभ कोन, फॉर ह्यूमन सेफ्टी, हमर लाभ पई कहि कि, बट हम ताको माने ने मोस्ट ऑफ द टाइम. So এই ସବୁ situation रे ମଧ୍ୟ पिला माने हमर कोन हबो, due to stress, frustration kind of situation, we are not concentrating towards driving, that's why this kind of accident will happen. Also आपण जोटा कहिले, it may be the poor road condition, very poor road condition or poor vehicle condition ମଧ୍ୟ दुईटा कहि परिबो, poor road condition, poor vehicle condition. गाड़ी रे भी कंडीशन खराब थी, एक्सीडेंट हबो, रोड रे भी कंडीशन खराब थी, एक्सीडेंट हबो, राइट. आउ कोन ही परिबो ना, समटाइम्स the basically accident happen due to कोन कहिले ना, एनिमल क्रॉसिंग, जेते बेले हम जाउचे मोस्ट ऑफ द टाइम देखिबे कुकुर स्पीडली हम ताको बंचिया को जाई कि हम छत्र हे के पडुचे, नहले तो षंढ आसी जाउची, नहले तो आपनकर किछि गोटे गाई आसी जाउची, किछि गोटे जिंस आसी जाउथबो, ताको जे सेव करिया को जाई कि एते स्पीड थिबा जेटा कि हम मानकर जनरली एक्सीडेंट हुए, हैला. तो ए सब हैला कोन कहिले पिला माने, these are the one causes, one reason, that is the basically we can say हमर कोन होची, accident happen. तो एठी कोन कहा जाउची, see every year, every time government creating awareness towards the society and the individual, हम मानन को कोन कहूची, help wear helmet, जो माने कार रे जाउचंती, please wear your seat belt,
सीट बेल्ट वियर कर हेलमेट पिंध रूल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन मान से आमे कौन करछे जदि आमे हेलमेट न पिंचे आजिका डेट रे भी गवर्नमेंट पूरा भल भाव फाइन कलेक्ट कला लोक मान तो पूरा माने एक्सीडेंट तो बहु परिमाण रे बढ़िला ताकू तो केमती कंट्रोल करबा ना हाउ टू कंट्रोल दिस तो फाइन पका जिते अमानिया अछंती अमान को फाइन पका आउ थरे फाइन देले सेकंड टाइम हेलमेट न देले आपण घरु बाहरबेनी राइट सो सी ए जो जनरली एवरी ईयर आमे कहबा प्रत्येक दिन प्रत्येक ईयर टीवी रे देखुतबा तो केमिति माने 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 सिचुएशन आग एक्सीडेंट रे देखुचे ना माने दिल माने आपण को दिल माने ये कर दबो हां हार्ट फेल्ट सिचुएशन आमे देखुचे सो एवरी ईयर more than lakhs of accidents happen in our day to day life and more than lakhs of people death in this particular situation सेठी पाई जनरली गवर्नमेंट कोन कहूची सुनंतु गोटे लाइफ गोटे जीवन ता फैमिली रो किते माने गोटे लाइफ होची बहुत प्रीशियस प्रत्येक लाइफ होची प्रीशियस लाइफ राइट सो स्मॉल मिस्टेक छोटो मिस्टेक small mistake if we can take care or if consciously we can do this so we can a small mistake it may be a very great problem it may be happen great situation it may be happen so hame kon kariba so it is our every individual responsibility we have to take care of this we have to jeti hame guidelines na padhile drunk and drive ho ki seat belt nahi helmet pindi nativa over speed ho or foggy weather or ए सब को every step we have to adapt cautiously so that we can save our life and also we can save our entire family life also खाली आमे हमर फैमिली भी जाउती फैमिली पूरा एंटायर फैमिली टा देखुचंती पूरा डिस्ट्रॉय हो जाउची राइट सो छोटो छोटो स्मॉल मिस्टेक छोटो मिस्टेक पाई कहि के राइट सो आमे हमर एंटायर लाइफ को एंटायर फैमिली को लूज करूचे स्मॉल मिस्टेक पाई सो दिस इज what we have to do we have to take care everything we have to know at the time of accident जेतेले accident माने कहार भी गोटे होउची it is our moral responsibility dear students आमे ते सब टेक केयर करिबा निजर फैमिली रो एंड समस्तंकर आजिटु जति करूथिले मध्ये we have to take proper step today onward so that we should not face this kind of problem केबे भी problem एमती फेस करिबानी राइट टिके लेट हो बट लेट न हो so apart from this it is our moral responsibility see if any kind of accident happen in any area jodi ame dekhuche so it is our first responsibility we should help that person jette amara काम thau jette ame busy thibo jette amara ye thibo amara प्रथम responsibility kon janchandi कि ame se lokota को jette pariba help kariba jodi se gote accident face karichi at the time of accident so ame kon kariba ma'am generally we have to at least we should call ambulance right we should call police and we have to any kind of accident happen in our practical responsibility we have to go there and we have to much support that person so that somehow amma pai boli janakara life ta survive kar daba amma pai boli janakara life ta save je panchi jibo बुझिले so this is what the causes of road accident and these are the basically take care of this समस्ते आजिठू ए सब जदि भी किछि भी ओवर स्पीड करिसंती सीट बेल्ट नौ नंती हेलमेट बांध ये करनांती ए सब जहां भी आपण एटू पढिले एटू रागीगिरी गाड़ी चलोचंती नो रागो ये सब पछरे बट सेते बेले काम एंड क्वाइटली यू हैव टू नो रोड रे तो सब ध्यान रखिबे हैला बुझी गले ना पिला माने इथरा किछि बुझी पान नै हैला ए सब इजी चैप्टर आगा आपण मन जानि चंती आपण माने ए सब कहबे मते तापर आसिला पिला माने रेल एक्सीडेंट एटा हला रोड एक्सीडेंट सेम टा एक्सटेंड कर दबा रेल एक्सीडेंट को बुझिले रेल एक्सीडेंट जनरली कह जाउची कि इन इंडिया एवरी डे around 50 more than 50 lakhs people traveling daily इंडिया रे in rail रे around 50 लाख लोक daily more than 50 lakhs people traveling daily जोटा कि केबे भी सीट मिलेनी 3 मास पूर्व रिजर्वेशन करिया पड़े and it is a India having a largest network railway network गोटे बहुत माने हमर भलो रेलवे नेटवर्क हमर डेवलप करची
हमरो कोन ना हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट राइट सो and it is a largest public undertaking by the government of India गोटे भल माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे सबुटु गोटे बड़ पार्ट होची हमरो रेलवे राइट आज पर्यंत एटा प्राइवेटाइजेशन हेनी हमर तो इंडियन एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन हे गला बट रेलवे टा प्राइवेटाइजेशन हेची हेनी तार किछटा पार्ट प्राइवेटाइजेशन हेची बट जेमति कि कैटरिंग वगैरह क्लीनिंग कैटरिंग बट एंटायर रेलवे डिपार्ट ये सब हाँ गुड्स को आपण क्लीनिंग को कैटरिंग कारण एटा पारिलानी गवर्नमेंट सो बेटर हमें भल फैसिलिटी दबा पई कहि कि से सब आउटसोर्सिंग से सब कर देछि बट अल्टीमेटली हमरो जनरली एकटा को देई देला बट रेल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ता हाथ रे रखि छि हला सो पिला माने जदी कहबा व्हाट इज द कॉजेस ऑफ रेल एक्सीडेंट हमें नियरेस्ट पास्ट रे देखि छ एग्जांपल जदी नबा करमंडल एक्सप्रेस ट्रेन डिजास्टर केमिति हेइतिला हमरो बालेश्वर रे न बालेश्वर रे हेइतिला महांगा महांगा हां बाहानगा हाँ से भी है जो करमंडल एक्सप्रेस ट्रेन डिजास्टर हेतिला किते भयंकर हेतिला केमिति हेतिला आम ओडिसा रे हमें देखि जे राइट द कॉजेस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट समटाइम्स इट लीड्स टू सेटा काई हेतिला दैट इज कंप्लीटली प्योरली ह्यूमन एरर हां सेटा पूरा ह्यूमन एरर थिला सिग्नल इशू फेल्योर ऑफ सिग्नल तो फेल्योर ऑफ सिग्नल जो है एटलीस्ट ये भी से तार कंट्रोल रे थिला सी ऑब्वियसली ताको टिके केयर नबा कथा राइट जी भी से सिग्नल इश्यूज है फेल्योर ऑफ सिग्नल और फेल्योर ऑफ सिस्टम व्हाटएवर मे बी इज देयर बट स्मॉल भूल पाई कहि कि छोटो गोटे ता पई से छोटो मिस्टेक सिग्नल प्रॉब्लम कहि कि काम सार देला सेठी सिग्नल इश्यू होला मु कोन करिबी सिग्नल फेल्योर हेगला सिस्टम फेल्योर ता पई से स्मॉल मिस्टेक हे पारे बट ता पई कहि कि कितने लोकंकर लाइफ चली गला कितने फैमिली डिस्ट्रॉय गला कितने फैमिली बर्बाद हो गला सेटा आपण देखिबा जनरली तो जनरली डियर स्टूडेंट्स कॉजेस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट जेमति के हम जानुचे मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंड आल्सो नेचुरल कॉजेस लाइक अ फ्लड साइक्लोन हां एमिति सिचुएशन रे मध्ये फ्लड हेवी फ्लड एंड साइक्लोन सब देखुचंदी सब ट्रेन को हमर स्टॉप कराय गेला सब ट्रेन को बातिल कराय गेला सब ट्रेन रे रूट चेंज कराय गेला कुहा जाउची काहे कि ना सेही टाइम रे जदी सेही रूट दे के जिवो ताले बहुत प्रकार प्रॉब्लम फेस करिवो सो अल्टीमेटली द ट्रेन एक्सीडेंट ड्यू टू समटाइम्स इट इज अ नेचुरल कॉजेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक वी कैन से नो apart from this it is most of the time it is human error it is the error by the loc pilot train operators no तार प्रथम भूल हमें कहबा राइट तापर हेला आपण जोडा हिना कहिले समटाइम्स सिग्नल फेल्योर ऑफ सिस्टम से जहां भी हो अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम ता फेस करूचे ना हमें अल्टीमेटली द कॉन्सिक्वेंस हमें ही फेस करूचे so mistake by the loc pilot or mistake by the signal or whatever may be the things is there it may be the intentionally or not intention by the human being but ultimately consequence faced by the society and individuals right apart from this kahi ki hobo jodi amar poor maintenance भी रहिला पूरा poor quality maintenance रहिले मध्य सेटा accident होबो राइट एंड समटाइम्स क्रॉसिंग ऑफ पीपल जेते लोक माने क्रॉस करछि त तको बाडे कि नै जीव छाडीबन टू व्हीलर साइकिल्स ए सब एंड आउ किछि टाइम रे मध्य जनरली नो ट्रेन एक्सीडेंट हुए जनरली काहे कि ना जो हमर लोक माने कोन करथिबे ड्यू टू सम नो एंटी सोशल एक्टिविस्ट जो माने थांती से माने कोन करिवे से ट्रैक लाइन को काटी देथिबे भांगी देथिबे तको ट्रैक ये कर देथिबे माने कोन कहिले तको डिसलोकेट कर देथिबे जॉइंट प्लेट को काट ने थे एग्जैक्टली जो माने हमरा जो हमरा स्पेशली माओइस्ट माने हां एंटी सोशल पीपल माने राइट सो से तको काटी देथिबे तो कॉन्सिक्वेंस कोन हबो अल्टीमेटली एक्सीडेंट हबो राइट सो ए सब होला गोटे मेजर कॉजेस एंड समटाइम्स आल्सो टेररिस्ट एक्टिविटी माओइस्ट एक्टिविटी हैला ए सब पाई मध्य हमर होए हैला तो डियर स्टूडेंट्स these are the causes of train accident हमें जानी चाहिए इतरे किछि विशेष पढिबार हमर नाही हैला causes of bus what हमर कोन कहिले road accident causes of train accident
आको ओवरकम करिबा जोटा कि निजर ये नहीं कि आउ किछि आर आउ नाही जदि आमे जिबा पिला माने कोन ना सपोज वी कैन से एयर एक्सीडेंट रो आमे नियरेस्ट पास्ट हमर एग्जांपल ग्रेटेस्ट एग्जांपल it was there in our nearest past 2025 12th June 2025 जोटा कि केही भी हमें भूलिबानी राइट जोटा कि हमर माने कोन कहिथिले जस्ट 32 सेकेंड्स रे सेटा को माजी देखुथिली तार केसटा को पूरा राइट आमे तो ताको पूरा देखिथिले स्टिल माजी ताको नोट करथिले जस्ट 32 सेकेंड्स आफ्टर टेक ऑफ रो 32 सेकेंड जोटा कि जाय कि हिट कला कोठी हॉस्टल ब्लॉक रे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक राइट बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक अहमदाबाद गुजरात रो राइट तो चिंता करंतु ओनली 1.7 किलोमीटर जाइतिला गोटे अधा किलोमीटर जाइछि फ्रॉम द रनवे टेक ऑफ कला जस्ट तापरे क्रैश कला केते जण मले 230 पैसेंजर 12 क्रू मेंबर्स 1 पैसेंजर्स ओनली अलाइव गोटे ही बंचिला जोटा कि भाई तू किए माने देखिबा लायक थिला से सिचुएशन ता से तार ओल्हेगी जाउची एमती हाथ को धरिकी गोड़ को धरिकी एमती चल चल जाउची तो पचला भाई तू किए ना मु से फ्लाइट रे थिली हे तू से फ्लाइट रे थिलु आश्चर्य माने 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 एमती आश्चर्य हे कि सब वर्ल्ड स्तब्ध हे कि ताको देखुता है चिंता करछथि तो एई जो सिचुएशन सी एयर एक्सीडेंट जनरली इट हैपेंड काहे की हुए जनरली नो the aircraft basically we can say the pilot face some kind of unexpected events जोटा भाबी नथिबो जोटा कि हमें कहबा एग्जांपल जोटा जस्ट हमें डिस्कशन कल unexpected event that happen in front of the pilot and the result kon habo it leads to damage injury loss of life full of death सेइटु त बंचिबार चांसेस से गोटी तार भाग्य माने से बोधे भगवान हे कि आस्तेला राइट that death by the passengers already we have discussed death by the crew members yes death by the ground staff male bije ground bije जो मेडिकल कॉलेज रो पिला माने भी मानकर भी डेथ हला से ग्राउंड रे जो टी स्टॉल वगैरह करथिले से मानकर भी डेथ हला राइट so many things will happen in that particular area and it is a great damage great loss of the what that jodi amar eta habo government of india rela government of india ro loss great loss of the society great loss of the human being great loss of the family everything eta causes of accident kon kahi ki हुए same things जोटा amar आपण ट्रेन रे पडिले एठी टिके डिफरेंट आसीबो ट्रेन रे ह्यूमन एरर एठी मध्ये ह्यूमन एरर सेठी लोक पायलट एठी पायलट राइट समटाइम्स फेलियर ऑफ आपण इन जस्ट कहले मैडम सिस्टम फेलियर आर मध्ये सिस्टम फेलियर जोटा कि एठी हमर जनरली जो हला कोठी हमर जो जस्ट हला सेटर हमर सिस्टम फेलियर बोली कहूची पता नहीं ड्यू टू वेदर कंडीशन भी होती ता भितरे ता भितरे बेले करप्शन होची काहे कि मोर जने सांग थिले तांकर भाई जण इंजीनियर अछंती तो से कोन कहले कि जते बेले माने कॉन्ट्रैक्ट दिया जाय माने को बेयरिंग फेयरिंग हे गला तो सेथरे से माने पैसा नहीं कि डुप्लीकेट जिंस लगे दियंती हैदराबाद एक माने से जो इंजीनियर थिले तो माने से डुप्लीकेट लगे थिले सेही दिन ही से प्लेन दा एक्सीडेंट हला माने सेही प्लेन नहीं एक्चुअली आउट ऑफ प्लेन एक्चुअली आ ऊपर गोटे फिल्म भी आ ऊपर गोटे तेरा फिल्म एमती आसे नहीं ना हां ई जो माने कोन कहिले मु देखी थिले गोटे फिल्म टी को गोटे फिल्म एटा देखथिले ई अक्षय कुमार रुस्तम ना कोन गोटे फिल्म ता सेम स्टोरी को नहीं करछि गोटे पुराना एमिति ही माने गोटे पुराना सब जिंस आग लगेबे अब से अप टू डेट नथिबो से जो रुस्तम फिल्म सेकंड हैंड एग्जैक्ट हां सब सेकंड हैंड जिंस डुप्लीकेट जिंस लगेइथिबे आ सेकंड हैंड सब सेटा एक्चुअली रे माने ये करिबारो तार कैपेसिटी नथिबो स्टिल प्रेशर दिया जो छुए तमे ताकू माने नबा को बाध्य एई सेही फिल्म रे सब देखैछि जोटा आपण कहिले एक्जेक्टली आमे कोन हां आमे तारो प्रैक्टिकल ता आमे जानू ने ना बाहर देखु जे एग्जैक्ट ए स्टोरी को नहीं कि से अक्षय कुमार से रुस्तम रो मूवी टा कछि रियल स्टोरी को नहीं कि सो ये मध्य गोटे कॉजेस जोटा कि मैकेनिकल इंजीनियर फेलियर फाइंड आउट करा जाउची तले गवर्नमेंट सेमती कोन पे स्टेप नउन जोथरे कि किछि एमती सबुथ तो एमाने सब भाई भाई सब मिले भगत हैला एमाने सब हाई लेवल रो जते सब इंडस्ट्रियलिस्ट अछंती हां सब से माने भाई के समस्त सेमान को सब सपोर्ट करिवे
ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ କଣ ଓପନ ପବ୍ଲିକ କୁ କହିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍? କେବେ ବି ନୁହଁ। ତ ନାଇଁ ସେଇଟା ଯେମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମର ହେଲମେଟ ପାଇଁ ହେଇଗଲା 5,000 କି 10,000 ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଭିରୁ କପି କରାହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡା କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଫାଇନ୍ ଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ ହେଇଗଲେ। ବଟ୍ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଏ ସବୁ କହିଲି ପରା, ଏ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଲେବଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ପଶି ପାରିବାନି। ବଟ୍ ଆମେ ଖାଲି କଣ, ହଁ ଆମ ଲେବଲ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାନେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। So generally ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, it is the engineer failures, it is the parts failure, mechanical failures, system failure ତ ଗୋଟେ ଗଲା, ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା it is the basically ନା ଆମେ କହିବା mechanical failure, parts failure। ସେଇଥିପାଇଁ କହିକି ହୁଏ poor weather condition, ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। So it will happen, poor weather condition, it leads to train accident, it leads to जोटा foggy weather ଆମେ कहले rainy weather, no, it leads to air accident, it leads to what ଆମର ये accidents, road accidents ସବୁ ହବ। But also sometimes bird strike जोटा कि हिट ହେଇ ଯାଉଛି ଯାଇକି ପକ୍ଷୀ ସହିତ, ଯୋଉଟା କି ଜଳି ଯାଉଛି, then and there ମାନେ flight ଟା ଜଳି ଯାଉଛି bird strike ମଧ୍ୟ, right? And sometimes terrorist activity ହେଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଆମର flight को କେମିତି hijack କରିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, terrorist activity, right? And technical issues ରହିଲା। So ଏଇ ସବୁ କାରଣ ନେଇକି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ କଣ, and also lack of proper aircraft maintenance, ଯୋଉଟା କି maintenance up to date ନଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଇନା କହିଲେ poor technology, poor engine, poor machinery, poor equipment, poor everything, and the up to date no ତାକୁ maintenance ନଥିବ। So ultimately ସେଇ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ସେ ତାର ହାତ ଝାଡିଦବ। ଏଇନା କଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, 5-10 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ହାତ ଛାଡିଦେଲା। ବଟ୍ କଣ ହେଲା, ମାନେ ମାନେ କେତେ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍? ସେ ତାର ହାତ ଛାଡିଦେଲା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ସରିଲା କାମ। କିନ୍ତୁ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କିଏ ଭୋଗିଲା? ସୋସାଇଟି ଆଜ ଏ ହୋଲ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାଟ ଦ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଏ ଟାଇପର ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଜଷ୍ଟ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ଜଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛେ। ସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ generally, it basically we can say the other name of the sea accident, also marine accidents, right? Also we can say no sea accident, or also we can call as a marine accident. Generally eta kon hochi na, this kind of accident take place on a ocean, jemti ki pura amaro example jodi naba Titanic, nearest future ame Titanic upare janiche, 1900 Titanic, it was happened, this kind of accident it was happened in the 1912 in a Atlantic Ocean रे ए सिचुएशन ता हेइथिला, राइट? आफ्टर क्रॉस जोटा कि से क्रैश कला जाय कि कोठी विद आइसबर्ग जोटा कि हमें पढ़िथिले, अनएक्सपेक्टेड हे कि सेटा थिला, राइट? सो आइसबर्ग सहित जाय कि क्रैश करी कि, सो कोटे फॉगी वेदर थिला एंड जाय कि क्रैश करी कि जोटा कि टाइटैनिक डिस्ट्रॉय हे जायतिला, जोथिरे कि 1503 लोक सेथिरे डेथ हे जायतिले, मोर देन 1500 पीपल कर डेथ हेतिला। बहु जन को रेस्क्यू करा जायतिला, बहु जन, बट स्टिल 1500 लोक रु अधिक लोक डेथ हेतिला। सो एटा जदि हमें कहबा मैम व्हाट इज द कॉजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सेम थिंग्स जोटा कि लाइफ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग लॉस्ट बाय द सोसाइटी, काहे कि ना अगेन इट इज अ ह्यूमन एरर। जति से टिके केयरफुली नहीं थांता फॉगी वेदर को ये कंट्रोल करिकी, जति टिके अलर्ट हेई थांता, ताहले एते बड़ हैपनिंग हेई न थांता मे बी, राइट? लेक ऑफ इट मे बी हमें कहबा, जति भी हमें कहबा जेते हमर जो फ्लाइट क्रैश होला ना, सेते कोन कहा गला कि इट मे बी द इनकम्पिटेंट पायलट हमें देथिले कि नहीं, ये बाहर करा हला कि रेशियो ना पूरा कॉम्पिटेंट पर्सन थिले। इट मे बी lack of proper training or incompetent person, it may be there as a pilot or as a driver or as a whatever may be the person, right? It may be flight, or it may be the sea, or it may be the everywhere incompetent, lack of training, a trained person. So seta madhya hei paribo, poor flight condition, poor ship condition, poor train condition, poor bus condition, ସବୁଥିରେ poor condition, जोटा हेबो accident हेबो। जदि सेठी टेररिस्ट अटैक होची फ्लाइट रे, कोन शिप रे टेररिस्ट अटैक करिवनी? ऑब्वियसली बाय द टेररिस्ट अटैक, एंटी सोशलिस्ट अटैक,
राइट आ मोस्ट ऑफ द टाइम आगुरु तो एना तो बहुत कमी जाइछि सी रे कारण बहुत सारा हमर नेवी वाला चारियाडे सब रहउचंती कहि के प्रॉब्लम टा होनी न बट आगुरु जेमति कि हमर रबरी होउतला सब कोन कहले जल दस्यु माने रहउतले पूरा सी आगु को पूरा रबरी करतले आज का डेट रे सेटा बहुत कमी जाइछि राइट सो ए सब सोमालिया होला सोमालिया हाँ सोमालिया आमे मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म रे सब देखिचे सोमालिया रो आसी कि समाने पूरा जलदस्यु माने सब ये करतले लुटी नउतले बट आज का डेट रे हमर ड्यू टू जो नेवी रो बहुत स्ट्रांग रोची इंडिया नेवी रो चारियाडे रोची एवरी कंट्री रो एवरी नेवी मानकर जो बहुत स्ट्रांग रोल रोची एटा प्राय कमी गलानी आज का डेट रे राइट सो ए सब रहिला जदि हमें कहबा डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू द मैकेनिकल फेल्योर वेट वेदर ड्यू टू द बेसिकली वी कैन से पोर शिप कंडीशन इट टू द इनएफिशिएंट ऑफ द दैट पर्सन जे ताको ड्राइव करूची दैट पर्सन ए सबुरु जदि हमें देखिबा एथि पई हमरा एक्सीडेंट हुए बट अल्टीमेटली it may be the air accident, it may be the train accident, it may be the sea accident. It huge loss by the family as well as the society. कारण हमको से 10 लाख दे देबो से 10 लाख नै कोन ताको कोन करिवो कोन कि 5 लाख करिवो कोन से पैसा कोन हबो हमर त लाइफ चली जाइथिबो ना जेटा फैमिली टा डिस्ट्रॉय हो जाइथिबो सो सेथि पई सो आर सब गोटिए हैला सो वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन आमे निजे ही प्रिकॉशन नबा तमे कहबो मैम ता माने कोन फ्लाइट रे जिबेनी विश्वास करंतु जेतले से सिचुएशन हैला एक्सीडेंट मु तो भाबिलो लाइफ रे फ्लाइट रे जिबेनी जेतले करमंडल एक्सीडेंट हैला मु कहलियो से जो करमंडल प्राय एक्सीडेंट करे जीवन रे करमंडल ट्रेन रे एटलीस्ट जिबेनी आउ जो ट्रेन रे जिबि प्राय करमंडल ट्रेन एक्सीडेंट करे मैक्सिमम टाइम रे सेही टाइम रे इच्छा आपण क्वार जिबेनी घरे बसी के रहबी ता माने नै कि सेटा हबो बट कौन लगे बाबा देखिकी जीवा देखिकी आसीबा से टाइप रो सिचुएशन जनरली हुए सो दिस इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स आकु सेति माने किछ स्लाइड नाही आकु कोन स्लाइड बनेबी हैला तो सेति पई रोल व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट रिलेटेड टू रेल रोड एयर एंड सी आकु ए वाइज ही मने रखिबे हैला पिला माने यस ना क्लियर ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट जीवा पिला माने हाँ ना किसी कहलेनी यस मैम आपनकर मैडम यार क्वेश्चन टा कोन आर क्वेश्चन what are the different type of accident what are the different types of accident briefly explain the causes and effects of accident हैला कौन different types of accident कौन लिखिबे road accident there are different types of accident it including road accident rail accident air accident and sea accident and what are the causes अपन फर्स्ट तक लिखि देबे like what are the causes is this road accident रे causes कोन जानचंती सबु जानचंती सब road accident रे causes these are the road accident causes these are the rail accident causes these are the sea accident causes these are the air accident causes सब causes लिखि देले चारटा को and overall solution गोटी solution दे देबे हैला गोटे सॉल्यूशन दे देबो ना व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑब्वियसली द ह्यूज लॉस ऑफ द सोसाइटी ह्यूज लॉस ऑफ द मींस लाइफ प्रॉपर्टी ए सब लिखि देबे इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस हमको निजो को आ ऊपर बहुत सारा टेक केयर करियो पड़िबो हैला बुझिले ना यस ना यस मैडम यस हैला हां ए टाइप रो आसीबो जोटा हमें सब इजी चैप्टर पूरा एटा क्वेश्चन आसला मन आपण पूरा लिखि देई जिबे हैला तापर चलंतु आपनकर ब्लॉक 2 पूरा कंप्लीट करतली ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 बहुत कम अछि स्टिल म ताको फर्स्ट कवर करूची हैला चलंतु फर्स्ट स्टार्ट करिबा कोन डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम we have already completed many natural disaster as well as the man-made disaster बहु प्रकार हमें ऑलरेडी डिस्कशन करके आसले कितने नेचुरल डिजास्टर कितने मैन-मेड डिजास्टर कौन सब हेई आसी हैला ए डिजास्टर व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन छोटी हालानी क्या हैला डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस व्हाट इट इज ए डिजिटल सिस्टम ऑफ कलेक्शन स्टोर डीआईएस एटा गुटे चैप्टर पिला माने मने रखिबे यूनिट 3 रे अछि ब्लॉक 3 रे
है disaster information system is playing a major role at the time of disaster. The disaster, it leads to man-made, or disaster, it leads to natural, right? So what do you mean by this? It is a digital system of collection, store, analysis, as well as circulation of all types of data, which can be put to use of disaster management. कौन करिबा ना एटा होची एमिति गोटे disaster information system. It is a such kind of area where through this we can collect the information. कोड कहार information collect करिबा related to disaster related to man made, disaster related to natural, हैला. Then से data को हमें store करिबा, then से data को analysis करिबा, then हमें circulate करिबा all type of data related to disaster management. कौन से सब केमिति करिबा, हाउ टू बिट कौन तार सब देखंतु. एम्स कौन नै कि आसला ए जो हमें कलेक्शन एनालिसिस ना डाटा सब करिबा रिलेटेड टू नेचुरल, रिलेटेड टू मैन मेड केमिति करिबा. अरे एम कौन नै कि आसला. जनरली दिस डाटा, द एम ऑफ दिस DIS, disaster information system, to basically activate the process of preparedness, response and mitigation. पिला माने मु आगरे जाय गोटे प्रोसेस पढेबी, process of disaster management. So there we will discuss some steps जोथिरे कि हमें पढिबा no disaster preparedness, response, recovery, mitigation. These are the different steps we will discuss there. What do you mean by these? What are the basically where it generally applied? No, in this, these are the things that we will discuss in this area. But aim of this of the DIS. Apart from this, through DIS, it provide only warning to us through only DIS. No, it provide. है तो आउ कौन हम ना टू डिजाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग मीन्स व्हाट देखंतु पिला माने जति आपण मानकु पाखु आस्तेबो कि नाही से वार्निंग ता मु जानिनी हैला एई ना 2 to 3 days बैक कि 3 to 4 days बैक अब समस्त वेरी गुड एनडीएमए ରୁ ଆସୁଛି warning. नहीं आपणकर एनडीएमए रो वार्निंग नहीं एना 3 to 4 days बैक समस्तकर इंडिया रो जत्ते जनकर अछि सेल फोन गोटे थरे रे वार्निंग हैला बाजिला पूरा आपण मानकर बाजी थिबो बाजुतला मैडम बाजुतला ना बस काई बाजला कहिले सेटा गवर्नमेंट टेस्ट कला देखो यस सेटा गुटे टेस्टिंग थिला कि एनी काइंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी विल हैपन. नेशनल इमरजेंसी इट लीड्स टू जदि किछि भी डिजास्टर हैला किछि भी नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन आसिला इट लीड्स टू वार हैला जोटा कि हमें कहबा मैन मेड डिजास्टर. इट लीड्स टू अर्थक्वेक हैला. इट लीड्स टू गुटे कोन कहले सुनामी आसी गला या सुनंतु आपण फ्लड रो सिचुएशन ता आगु जानि परिबे, साइक्लोन सिचुएशन ता आगु जानि परिबे, अर्थक्वेक तो जानि परिबेनी, फ्लड तो ए तो हमर ये जानि परिबेनी कोन कहले सुनामी तो जानि परिबेनी. जमती कि आपण कहिबे हठात गोटे कोटी गोटे बम ब्लास्ट हैला कि वार हे गला जानि परिबेनी. आको केमिति गवर्नमेंट अलर्ट करिवो सेइथि पई पूरा आमे जते सब थिलु गोटे रूम रे आमे जो डीडीसी रे समस्त को आमे पूरा आश्चर्य गलता पूर्व दिन से अलर्ट करितिला कि मो काली कि आमे गोटे टेस्टिंग करिया को जाउछ एटा बाजिबो. भाई एमिति बाजिला पूरा एट ए टाइम समस्त को मोबाइल पूरा माने साउंड हैला पूरा जेमति अलार्म बाजिला बहुत लाउडली नो काहे कि through DIS, disaster information system. If something will happen, it is the initiative taken by the government of India. No, जो प्रकार आपन सिम था से एयरटेल हो BSNL हो जो प्रकार आपन थाउची था सी कौन करिवो ना देखो तो किते स्ट्रांग डाटाबेस किते स्ट्रांग नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करूची. See any kind of national emergency, any kind of some kind of high level of disaster will happen, then government of India will alert whole India in a single moment, in a fraction of second. It will alert and every people they will aware about the situation. फटाफट गोटे within a fraction of second रे हमें alert हेची बा जे हां या हबा को या हेची कि हबा को जाउची, right?
So this is the power of DIS, disaster information system. से जहाँ होची हमर तो सब आगे डिजास्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम अंडर रे कवर हला से वार हो कि से अर्थक्वेक हो, राइट? हला तो कवर हला से एठी कोन हला नो सर दिस इज व्हाट द अर्ली वार्निंग सिस्टम जोटा कि 3 to 4 डेज बैक गोटे आपण ताको गोटे ग्रेट एग्जांपल रे नै परिबे, राइट? जोटा कि केमिति वार्निंग आस्तिला हमको. So this is the power of the DIS, disaster information system. Then after कौन aim नहीं किया DIS? Now the disaster information system generally to communicate for timely relief and response measures. See, through DIS it can communicate to that particular area, to that particular people, no, that area of people. So and also through these, the government of India and the other people, they can provide relief in timely in that particular area, and it can be happen through DIS. Disaster information system through हम जानी परिबा जे को एरिया रे लोक मान एक्चुअली रिलीफ दरकार अछि को माने सेठी माने प्रॉब्लम फेस करूचंती, and through this we can timely provide that help in that particular area of the people, right? And also we can rescue that people through guide. We can rescue, we can provide, give the government of India and the it may be the state government or it may be the central government. They can provide the rescue team in that particular area and also can rescue the people. Say area ro lokon ko rescue bhi rescue team bhi pathai pariba, rescue bhi kari pariba. Kemti through DIS. Also emergency evacuation. जदि किछि हमर emergency evacuation अछि, facility for process of emergency evacuation. जदि किछि emergency situation अछि, धरंतु गोटे एरिया रे completely लोक माने गोटे रहि जायछथि, चारिआडे पानी हे जायछि, सेटु लोक माने बाहरी पारनांती. हां संगे संगे आसले सेठी information सेठी पहुंची परिबा then and there सही moment रे. So ए सब मध्य हेई परिबो. And also we can prepare for various disaster map. ए हेला सब various disaster map. And it can be happen through DIS only. जितने सब देखो तो मैप बना जाइए केमिति ना मेजर डिजास्टर प्रोन एरिया कोठी most of the disaster prone related to earthquake, disaster prone related to flood, disaster related to tsunami, no? हैला ए सब को जेमति कि हम आइडेंटिफाई करिबा ए सब आगो केमिति हे परियो जते आपण मैप देखुचंती it can be happen through only ना हमर कोन through DIS. Apart from this, it establishes linkage between district administration and people. Our district administration means government. Government to people को जो linkage टा करी परिबो आ through रही परिबो. And also, it through this DIS, the government of India, government of Odisha, it can manage the control room. Control room through पूरा entire area को control करी परिबो through DIS. And also, it can be developed planning, policy, everything it can be possible through this DIS. That's why disaster information system, जोटा कि आज का डेट रे गोटे great role play करे to manage the disaster properly. जोटा कि disaster को properly manage करिया पाए. Use of DIS, जोटा कि हमें कौन करूचे देखो तो use of DIS generally disaster identification. हमें identify करिबा through DIS, where the disaster will happen, when the disaster will happen, how much area it will be affect, what are the precautions we have to take, everything it can be possible through DIS. Apart from this, disaster history analysis. एमिति आगो देखिबे धरंतु गोटे फ्लड आसी हैला ए साइक्लोन हबो टीवी रे आपनकर ए टाइप रो साइक्लोन लास्ट 50 वर्ष कि 100 वर्ष तले केबे केबे हितला से पूरा एंटायर जिंस टाणी कि आपन को फ्रंट रे थई देबो जोटा कि हम बियॉन्ड इमेजिनेशन जानि भी नथिबा केबे से सब, राइट? तो सब केमति आनले से डेटा ना थ्रू डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम. This everything it is there in a system. Now the things is that we have to collect everything. हम स्टैटिक रे कोन पड़ले डाटा कलेक्शन हम एटे डाटा को कलेक्ट कले everything it is there in the system. सब जिंस को रखा छी तो हम कलेक्ट करके प्रॉपर्ली कौन करिबा मैनेज करिबा एंड प्रॉपर्ली एनालिसिस करिबा. So it can be possible, we can analyze the history, na disaster history analysis, it can be possible through DIS. Collection of data, identification of data, analysis of data, analysis of history of the disaster, geographical map, geological map, no, tracking of the missing people, no,
जदि किछि गोटे कोडी लोक मिस हे गला कोन हे गला न बेसिकली व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ताको हमें ट्रैक करि परिबा डाटाबेस मैनेजमेंट करि परिबा रिलेटेड टू एक्जिस्टिंग ह्यूमन और मटेरियल्स मान को पई बोली राइट को लोक किए सेठी जाई परिबो देन वी कैन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनजीओस वी कैन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सोसाइटी राइट apart from this हम as upare बहु जिंस करि परिबा through DIS only we can kon kariba now we can provide the collect the material and we can provide the training to the people right ए सब किछि करि परिबा so disaster information system is that much used in the present day environment without this it is very difficult to reach in a particular area आकु छाड़ देले जदि हम सिस्टम फेलियर हे गला हमें बहुत जिंस हमें पारिबानी करि परिबानी so it is very difficult to माने करि परिबा ता माने ना कि इम्पॉसिबल किछु न करि परिबा बट जोटा क्विकली हबा कथा जोटा it will take some time no so through this we can do everything very smoothly very easily that is the use of DIS dear students in the present day environment हैला आ पाई पिला माने एठी देखि दियंतो खाली दरकार नै DIS तो DIS को मैनेज करबा पई various nodal agencies are there for disaster management आकु जनरली हमें कहबा NDMA तो कंट्रोल कोचिन हमरो इंडिया रो but still for various ministries are there to control various kind of disasters जेमति कि chemical disaster ministry of environment and forest industrial disaster ministry of labor so these are the different no ministries and different group of team and peoples are there who is responsible for this kind of disaster जदि जी जो disaster हला सी तारो responsible नै कि से ताको mitigate करिवो and ताको control करिवो apart from this various NGOs are also there जोटा कि no at the time of disaster they are playing a major role they are supporting to the government they are supporting to the society they are supporting to the people NGOs are there no ए सब जेमति कि आपनकर बहुत सारा NGOs अछंती specifically disaster management रे different agencies are also there जेमति कि हमें रोइडी लेखा जाईची NDRF national disaster response force पढिबा हमें 2005 act रे disaster management act 2005 हम पढिबा सेठी हैला OSD जेमति कि हमें कहबा ओरिसा स्टेट डिजास्टर रिपेयर एक्शन फोर्स national disaster management authority variety kind of disaster agencies are there also जे कि those are playing a major role at the time of any kind of disaster जार जोठी रोल दरकार पला सेठी समाने ग्रेट रोल प्ले करंती it may be the natural disaster or it may be the man made disaster बुझिले कि पिला माने एति के एठी मन रखिबे एटा खाली मु जानिबा पय आपण मानु कहले ए सब किछि मन रखिबा दरकार नै बट आपण एठी मन रखिबे कोन व्हाट डू यू मीन बाय DIS कोन हैला तापर हैला आपण मानकर कोन एम्स ऑफ DIS एंड व्हाट आर द यूज ऑफ DIS एति के जिंस एठी मन रखिबे डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड हैला पिला माने क्लियर स्टूडेंट्स Yes, ma'am. हैला काली के आपणकर पढ़ेबी कौन कहले डिजास्टर मेडिसिन्स पढ़िबा एंड वी विल डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ए सब को काली कवर करबा बाकी जा रहला पर दिन कवर करब हैला थैंक यू स्टूडेंट्स चलो तो मैम बाय ऑफलाइन क्लास केबे हबो Thank you, ma'am. आज्ञा कौन कहले ऑफलाइन Thank you, क्लासेस ma'am. केबे हबो हां ऑफलाइन आज्ञा क्लास कहिबे सर ऑफलाइन क्लास सर कहिबे नोटिस दिया हबो से अनुसार क्लास करिबे आसिकरी हम एथर कन्सिडर कि लंबा टाइम पर्यंत हबो ना कम टाइम पर्यंत हबो सेटा मु किछि जानिनी एक्चुअली सेटा लंबा टाइम हबो कि कम टाइम करिवे को टाइम रे करिवे सेटा सार डिसीजन नेबे मैम डिसीजन नेकी एक्चुअली कोन होछि करा 7 घंटा 8 घंटा कांस्टेंटली ऑनलाइन रे क्लास हला लकु माने डिफिकल्ट गोटे होची इमेजिन हां करिया कथा 8 घंटा ड्यूटी 8 घंटा क्लास जने मनुष्य केमति 8 करिवो घंटा क्लास हां तो काई मॉर्निंग इवनिंग रे तो भाग बांटी की करा होची ना भाग बांटले भी से हिसाब रे 8 घंटा मझरे ड्यूटी रही होछि ना तो तापर अच्छा भी सेटा कौन जदी करिया 3 घंटा 4 घंटा हेतले बेटर हिथांदा सेमती माने टिके देखिबा अछि ना कहिना ऑल प्रोफेशनल्स आर देयर आउ अरे कौन कहले आपनकर जो सब्जेक्ट भी बहुत ना देखंतो जनरली सब्जेक्ट बहुत रहउची तो हमें सब्जेक्ट एग्रेसिव 10 दिन भीतर को पई छाड़ दिया होछि हम टाइम नेकी गोटे मास क्लास होंता कोन प्रॉब्लम होंता एते एग्रेसिव नहीं 10 हाँ दिन क्लास करे नहीं जेमती नहीं मासे क्लास करिवारे किछि नहीं जे आपनकर भी आपन 8टा पेपर तो नहीं 6टा पेपर नहीं सेमिस्टर रे आज्ञा 6टा पेपर अछि
ଛଅଟା ପେପର ସକାଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ଉପରବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ନ କଲେ କଣ ହବ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ତ 8 ପଢୁନଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ସେପଟେ 6 ଘଣ୍ଟା କଲେଜ ଯଦି ଆଗ୍ରେସିଭଲି ହେଇଯାଉଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା ଡେଫିନେଟଲି କିଏ ନା କୋଉ ପଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତା। 6 ନାଇଁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଳକୁ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଅଫଲାଇନ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ କିଛି ରିକ୍ୟାପ୍ କି କଣ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ତ କରିବୁ, ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ବି ହବ କରିବେ ସାର୍ ମାନେ କାହିଁକିନା ନୋଟିସ ଲାଷ୍ଟ ଦେବେ। ଥର ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସେସ୍ ରେ କେବଳ ଯେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସରିନଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ କଭର କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-2ଟା କ୍ଲାସ କରିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନା। ମ୍ୟାମ୍ ମାସେ ଆହୁରି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁନି, ମାନେ ଯେମିତି 10-15 ଦିନରେ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇଥିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବା ପା ଆମେ ଅଫଲାଇନ ରେ ସେଟା କରିବା। ଅଫଲାଇନ ଟିକେ ଏଟା ମ୍ୟାମ୍ ତାର ଏଇଥର ଅଧିକା ହେଲେ ବେଟର ହବ, କାହିଁକି ନା ହଁ କରିବେ ସାର୍ କହିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମ କରିବେ ଥିଲା। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ନୋଟିସ ଦେବେ, କହିବେ କେତେ ଦିନ କରିବେ କଣ କରିବେ ଟାଇମିଂ କଣ ରହିବ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ 6ଟା ପେପର 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ବହୁତ ଟାଇମ, ତାପରେ ଆହୁରି ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେପ ନଉଛୁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ପଢୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ। ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଦିଟା ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି ଯେ। ସେଇ ତ ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କି? ହେଇପାରୁନି। 8 ଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ସେପଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇପାରୁନି ନା। अच्छा चलंतु थैंक यू सी यू टुमारो चलो बाय बाय गुड नाइट थैंक यू। हेलो अरे मो वॉइस आसुचे ସାର୍ Yes, ଜି sir. ସାର୍ ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Good evening, sir. ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार गोटे सब मु होस्ट अच्छी ना नहीं ना अपराजिता विश्वाल किए होस्ट अच्छे अरे मत होस्ट कर दियो Yes, sir. Yes. Mm. हाँ थैंक यू Okay, sir. आज मैं फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करबा तापर आमे जिबा टैक्स लॉ पर मु सब यूनिट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम डाकू फास्ट देखंतु यूनिट 1 रो यूनिट 1 रे हमर अछि क्वेश्चन गुड़ा लिखंतु डिफाइन कंपनी
define company, discuss the characteristics of a company, define company, discuss the characteristics of a company, elaborate different types of company. अरे प्रथम क्वेश्चन लिख लो, define company, what are the characteristics of a company, discuss different types of company. First question over. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Question number 2. Elaborate different steps. Elaborate different steps involved in. Elaborate different steps involved in formation of a joint stock company. Elaborate different steps involved in formation of a joint stock company. Question number 2 over. Next question. Question number 3. Differentiate between memorandum of association, differentiate between memorandum of association and article of association. Discuss different clauses of memorandum of association. अरे क्वेश्चन लिख लो. Discuss different clauses of memorandum of association. केटे क्वेश्चन गला? 3 क्वेश्चन. 10 first. Question number 4. What is article of association? What is articles of association? What are its contents? What is article of association? What are its contents? How article of association can be changed? Question number 4 over. Next, question number 5. Define prospectus. Define prospectus. Discuss different legal requirement in relation to prospectus.
define prospectus, discuss different legal requirement in relation to prospectus. Long question gala. Short question. Short question e lekho one person company ba OPC. Second, promoter and types of promoter. Promoter and types of promoter. लिखिल Yes, sir. यूनिट 1 ओवर तापर आमे जिबा कोठी की यूनिट 2 बा मॉड्यूल 2 बा ब्लॉक 2 जहा कहबो तुम ब्लॉक 2 ब्लॉक 2 रे नंबर 2 जाय छै मेमो वाला ये वाला लिख ब्लॉक 2 क्वेश्चन नंबर 1 what is a private company? What is a private company? Make distinction between private company and public company. Make distinction between private company and public company. लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 who is a director? Who is a director? Discuss the appointment, qualification, disqualification of a director. Who is a director? Discuss appointment, qualification and disqualification of a director. Question number 2. Yes, sir. बेटा क्या हो? Question number 3. Question 3 हाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखो elaborate different types of director. Discuss elaborate different types of director. सेथे लिखो highlight the powers and duties of a director. Highlight the power and duties of a director. लिख लो तापर लिखो define
company meeting. Define company meeting. What are the essential of a valid company meeting? Next question. Highlight. सर हाँ. सर 4 नंबर एक बार थोड़ा बोलिए सर। Define number. company meeting. What are the essential of a valid company meeting? Okay, sir. Define company meeting. What are the essential of a valid company meeting? तादरे कौन लिखा हबो? There must be it must be convened by convening authority. It must be supported by notice. There must be quorum. There must be chairman. There must be minutes. Next question लिखो. Highlight different kinds of company meeting. Kinds of company meeting रे कौन लिखा हबो? Shareholder meeting, board of director meeting, creditor meeting, debenture holder meeting. अरे हला long question सरला. अब लिखो short question. Short question. देखो differentiate between holding company and subsidiary company. Holding company and subsidiary company. Differentiate between holding company and subsidiary company. Next question. Short question. Next short question लिखो. Small company and government company. Small company and government company. अरे लिख लो. Yes, sir. Yes, sir. आगे सर। Unit 2 सरला. Next time जिबा Unit 3 को. Module 3. तमरो मुख्यतः क्वेश्चन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 रु आसीबो बेसी 4 और 5 रो कोन क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसीबो हम कह देबी डायरेक्ट तो चलला नेक्स्ट लिखंतु डिफाइन शेयर कैपिटल discuss different kinds of share capital लिख ले define share capital discuss different kinds of share capital
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखंतु व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बा CSR? What do you mean by corporate social responsibility? Bracket रे CSR. Discuss the need, importance of CSR. सेथे लिखंतु elaborate define CSR, discuss the need and importance of CSR. तापर लिखंतु elaborate various provisions of Companies Act 2013. Elaborate various provisions of Companies Act 2013 related to CSR. लिखिले हाँ सर नेक्स्ट लिखंतु व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी? व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी? narrate different modes of winding up of a company. सेथे लिखंतु what are the consequences of winding up order for a company? What are the consequences of winding up order of a company? Define winding up of a company. What are the modes of winding up of a company? Highlight the consequences of winding up order of a company. अरे मुटा को गोल कर दूची जो पोर्शन गुड़ा को इंपोर्टेंट ताकि तो देखिए लिखी दबो कौन अछि नेक्स्ट लिखो mention various legal aspect related to books of accounts of a company. Discuss various legal aspects related to books of accounts of a company. सेथे लिखंतु what are the statutory registers? What are the statutory registers to be maintained by a company? तापर लिखंतु सरला केटे क्वेश्चन गला चारटा जाइथिबो बोधे सर एक क्वेश्चन टिके रिपीट करिवे टिके मझे वॉइस ब्रेक हैला
discuss various legal aspect related to books of accounts of a company. आप लिखंतु what are the statutory registers to be maintained by a company. तापर लिखंतु who is a company auditor who is a company auditor, what are the qualification, rights, duties of a company auditor. Highlight highlight different legal aspect. Highlight different legal aspect related to company audit. अरे लिख ले. Yes, sir. Unit 3 over. Thank you, sir. तापर जिबा Sir, unit unit 3 की sir unit 3 short sir question unit sir 3 की short short question question नहीं नहीं है। ना question long question भितरु जदि short question पड़िबो पड़िबो. तापर हमें जिबा unit 3 रे ଗୋଟେ short question लिखि दियो. Differentiate between members voluntary winding up and creditors voluntary winding up. Members voluntary winding up and creditors voluntary winding up of a company. अरे लिख ले. Yes, sir. ଆଜ୍ଞା तापर जिबा ए जो कहितली आपण को को स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन हबो एले ଗୋଟେ क्वेश्चन डाकि नथिली ए उडाक statutory books and registers to be maintained by a company. आपनकर 110 और 111 नंबर पेज रे अछि. एउडा लिखिबे register of investment, register of charges, register of members, index of members, register of debenture holders. एउडा लिखिबे हला एउडा सब. तापर असला ऑडिटर तो डाकिले क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पोजीशन ऑफ ऑडिटर ऑडिटर क्वेश्चन गला. तापर लिखंतु नेक्स्ट लिखंतु define tax planning. Define tax planning. What are its benefits? Define tax planning.
what are its benefits? Rather likhantu, distinguish between tax evasion, tax avoidance, and tax planning. ये तीनटा काली पढ़ी थी. Tax evasion, tax avoidance, and tax planning. लिख ले. Yes, sir. Next question लिखंतु. Short question. Short question लिखंतु. First, heads of income. अरे कितना हेड्स ऑफ इनकम अछि? पांचटा अछि सर. पांचटा ता विषय लिखिबे. कोन कोन? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. लगे हेड्स ऑफ इनकम. तापर लिखंतु डिफरेंस बिटवीन CY, FY, PY, AY. कौन है उड़ा को? Current Year, year, sir. previous year, नहीं, Year होगा. कैलेंडर ईयर, Financial year. financial year, Assessment year. फाइनेंशियल ईयर, Previous year, assessment year. प्रीवियस ईयर, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? Assessment year. Assessment year. बुझिले? CY, FY, PY, AY. तापर लिखंतु discuss the benefits of tax management. এটা নুয়া কথা পড়িবে। tax management. तापर लिखंतु what is tax planning? Elaborate the benefits and limitation of tax planning. Sir, अरे also लिखते हैं, to benefit and limitation of tax planning. तापर चलंदु नेक्स्ट आसीबा हमारे नेक्स्ट यूनिट 5. लिखंतु यूनिट 5. लिखंतु व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी माने Goods and service tax. service tax. Discuss the genesis, need, objective, scope, characteristics of GST. Sir, how the dige? Define GST. Discuss Sir. the
Genesis ମୁଁ highlight କରିଛି ଦେଖି ସେଇଠୁ ଟିପି ଦିଅ Genesis comma need comma objectives comma scope comma characteristics of GST लिखते sir Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखंतु एमती गार फार पकेकरी कोन फायदा होउची तमर ये से पिला तो खोजी किछ लाभ नाही मोर नेक्स्ट लिखंतु डिस्कस दी advantages comma disadvantages and challenges of GST advantages disadvantages and challenges of GST ସେଇଥିରେ ଲେଖନ୍ତୁ discuss various types of GST discuss various types of GST या माने यूनिट 5 रे GST ऊपर ଗୋଟେ क्वेश्चन पडिबो बुझि पारुछंती Yes, sir. तापर लिखो टाइप्स ऑफ जीएसटी गला तापर लिखंतु डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं तापर लिखंतु शॉर्ट क्वेश्चन फास्ट लिखंतु टीडीएस माने ब्रैकेट कर लिखंतु टैक्स डिडक्टेड at source next लिखंतु highlight different type of returns that is income tax returns by corporate returns अरे लिखिले sir Yes, sir. जोटे से भैंडाम कर दे जाइए एठी गारे करे मते पुणी थे टाइम नष्ट करियो पड़िबो ठीक है अभी हम जो चैप्टर बाकी था वहां से शुरू करेंगे चैप्टर 4 में हम टैक्स प्लानिंग उसमें थोड़ा कुछ बाकी था उसके बारे में बात करेंगे फिर रिटर्न पढ़ेंगे कल का क्लास पूरा हम डेडिकेट करेंगे किसके लिए जीएसटी के लिए ठीक है हाँ तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे देयर आर 3 ways of reducing tax first is tax evasion it is an illegal way of reducing tax how tax evasion occurs you do not show an income or you under report an income you over report an expenditure you make some benami transactions okay you make transactions in the name of your servants benami transactions these are coming under tax evasion tax evasion is a criminal activity it's a crime it is not allowed under law it is an illegal activity if you found to be involved in tax evasion
you will be penalized with monetary fine as well as you will be behind bar. There are provision of imprisonment for tax evasion. Am I clear? Next one is tax avoidance. What is tax avoidance? It is a legal way of reducing tax, but in this case, the taxpayer obey the law, obey the rule by letter, not by spirit. In this case, the taxpayer always try to find out the loopholes in the income tax laws and take the benefit of those loopholes to reduce the tax liability. And this is not a criminal activity, but it is an unethical activity. From a good citizen, government does not expect this sort of things to reduce the tax liability. In this case, you will not be treated as a good citizen, but you will not put behind the bar. There is no scope for penalization. Another type of reducing tax liability is tax planning. It is a legal as well as ethical way of reducing tax liability. In this case, there are many inbuilt ways of reducing tax, and these inbuilt ways are put in the Income Tax Act in form of deductions, in form of rebates, in form of reliefs, in form of exemptions, in form of other tax holidays. You take benefit of those inbuilt mechanism of Income Tax Act and plan your income accordingly and reduce the tax liability. It is a legal as well as ethical way of reducing tax. Every citizen of India has a right for tax planning. It's the constitutional right given to citizens, and we have a right to plan our tax. That is known as tax planning. Every person must involve in tax planning to reduce the tax liability. Am I clear? We have discussed up to this tax planning, tax evasion. Now, we will discuss another concept, that is tax management. What is tax management? Now, please see, tax management is a part of tax planning. It is a subset of tax planning. If it is tax planning, this is tax management. This is tax planning and this is tax management. It is a subset of tax planning. It is a name given to compliance of tax laws. What does it mean? It means that in the Income Tax Act, there are certain deadlines. You have to follow those deadlines. The deadlines is related to filing of return. The deadline is related to deposit of TDS. The deadline is related to deposit of TCS. There are many deadlines. And if you meet all those deadlines, then you manage your tax and you avoid unnecessary interest and penalty imposed on you. And this is known as tax management. That means in this case, you follow the deadlines given by Income Tax Department for various compliance of tax laws. Okay, so it is related to filing returns in time. It is related to issuing TDS certificate in time. It is related to payment of tax in time. It is related to rectification of any mistake committed in time. It is related to going for appeal in time. These are related to tax management.
If you manage your tax easily, you avoid the following things. You avoid any payment of interest. You avoid any payment of penalty. You avoid any prosecutions. So it's a part of tax planning. नेक्स्ट, एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, अभी हम बात करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? बहुत जगह पर देखा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखा, बहुत लोगों के पास इनकम है लेकिन वो अपना इनकम बताते नहीं। जैसे मैं एक उत्कल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं, अभी उत्कल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी मिल रहा है, मेरे को इस सैलरी मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है गवर्नमेंट को तो पता नहीं, कितना सैलरी मिल रहा है, कब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। मैं इस साल मेरे को 15 लाख रुपया सैलरी मिला, सो मैं गवर्नमेंट को बता दिया मेरे को सिर्फ 10 लाख मिला, 10 लाख के ऊपर दूंगा। अगर पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा, नहीं तो नहीं। पकड़ा नहीं गया तो 5 लाख का इनकम अंडर रिपोर्टेड रह गया। मैं कहीं पर जाकर एक्स्ट्रा क्लास करके शाम को कुछ पैसा कमा ले, उसको गवर्नमेंट को बताया ही नहीं, उसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं। मेरा जितना पैसा है वो पैसा बैंक में रख दिया, बैंक में रखकर बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, उसका पैसा दे रहा हूं, उसको बताता नहीं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोला ऐसा बहुत गुरुदेव लोग इंडिया में हैं, इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो वो एक सिस्टम निकाले, उस सिस्टम का नाम है TDS। TDS का मतलब ये मेरे को नहीं बोले, ये मेरे ऑपोजिट पार्टी को बोले, जो मेरे को इनकम दे रहा है उसको बोले। सपोज मेरे को इनकम, मेरे को सैलरी इनकम कौन दे रहा है? मेरे को सैलरी उत्कल यूनिवर्सिटी दे रहा है, ठीक है। उत्कल यूनिवर्सिटी मेरे को 15 लाख रुपया सैलरी दिया सब कुछ। तो उत्कल यूनिवर्सिटी 15 लाख जो सैलरी दे रहा है उसको बोल रहा है तुम जब भी सैलरी देना, क्या करना, उसके सैलरी से 1% काट कर हमारे पास में डिपॉजिट कर देना। इसका मतलब मेरा 15 लाख का सैलरी है, मेरे को 15 लाख नहीं मिलेगा। उत्कल यूनिवर्सिटी सपोज 10% काटा तो कितना काट दिया? 1,50,000 काट दिया। मेरे को कितना देगा? 13,50,000। बाकी 1,50,000 किसको देगा? गवर्नमेंट को। ये दिया मेरे को। मैं उत्कल यूनिवर्सिटी को बोलूं भैया मेरा तो 15 लाख सैलरी है, तुम 13,50,000 क्यों दे रहे हो? वो मेरे को एक लव लेटर हाथ में दे दे। वो लव लेटर में क्या लिखा होगा? आपके सैलरी में से 1.5 लाख रुपया उत्कल यूनिवर्सिटी काट कर गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया, इनकम टैक्स के पास में डिपॉजिट कर दिया। कितना? 1.5 लाख रुपया। और ये लव लेटर मेरे को देगा 13,50,000 का कैश, और ये लेटर को बोलते हैं TDS सर्टिफिकेट। इसका मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया मेरा इनकम 15 लाख है, उसके ऊपर क्या टैक्स बनता है अलग है, लेकिन मैं अगर इनकम रिपोर्ट नहीं करूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया इसके पास इनकम है लेकिन रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो साल के एंड में मैं अपना सारा इनकम कैलकुलेट करूंगा, इनकम टैक्स को बताऊंगा। इनकम टैक्स बोला ठीक है तुम्हारा सारा इनकम मिलकर 20 लाख हुआ है, उसके ऊपर टैक्स बनता है
तुम्हारा सारा इनकम मिलकर कितना हुआ है? एक सेकंड, तुम्हारा सारा इनकम मिलकर 20 लाख हुआ है और उसके ऊपर टैक्स बनता है 20 लाख के ऊपर, सपोज बनता है 1,90,000। मेरे को अभी 1,90,000 नहीं दियाना है, क्योंकि मेरे को 1,90,000 टैक्स बनता है। मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, कितना? 1,50,000। तो मेरे को कितना टैक्स देना है? और 40,000 टैक्स देना है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज बैंक में मैं डिपॉजिट रखा हूं, मेरा इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर आ रहा है। बैंक क्या करेगा? मेरा इंटरेस्ट 60,000 आ रहा है, बैंक मेरे अकाउंट में 60,000 डिपॉजिट नहीं करेगा। 60,000 का 10% सपोज टीडीएस रेट है, तो 54,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, 6,000 इनकम टैक्स के पास में डिपॉजिट होगा, और साल के एंड में बैंक मेरे को एक सर्टिफिकेट दे देगा, टीडीएस सर्टिफिकेट। आपके इंटरेस्ट में से 6,000 कहां पर डिपॉजिट हो गया है? इनकम टैक्स के पास। उसका हिसाब तुम फाइल करके लो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टीडीएस। एनी डाउट टीडीएस के बारे में? टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां पर इनकम आ रहा है वहीं पर टैक्स काट दो, फिर साल के एंड में जब उसका असेसमेंट होगा तब देखा जाएगा कितना बन रहा है, कितना काटा है। बाकी डिफरेंस क्या होगा? आपको दिया जाएगा या आपसे लिया जाएगा? दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं रिफंड, आपका आ जाएगा। लिया जाएगा तो आपको डिपॉजिट करना। हमें क्लियर? तो टीडीएस किसको काटना है? जिसको पेमेंट करना है उसको काटना है। उत्कल यूनिवर्सिटी को मेरे इनकम के ऊपर टीडीएस काटना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेरे इंटरेस्ट के ऊपर काटना है। सपोज मैं छिपकर जाकर सोआ यूनिवर्सिटी में 2 क्लास कर लिया, 2 क्लास का रेट हो रहा है 2,000, लेकिन वो 2,000 नहीं देंगे, 1,800 देंगे। 200 रुपये का क्या देंगे? लेटर देंगे। 200 रुपया आपका डिपोजिट हो गया। बेटा मेरा बात समझ में आ रहा है? टीडीएस क्या है? इट इज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेयर ए पर्सन responsible for making specified payment such as salary, commission, professional fees, interest, rent is liable to deduct certain percentage of tax before making payment. It is a process of charging and collecting tax at source of income. Any doubt regarding TDS? TDS समझ में आ रहा है? TDS is based upon the concept pay as you earn. You earn and you pay. Collect as it is being earned. Whenever income is earned, you collect tax on it. That is known as TDS. Yeah, tax deducted at source. Any doubt? Who is liable to deduct TDS? TDS कौन काटेगा? The following are specified person who is liable to tax deduct TDS. An individual or a HUF is not liable to deduct TDS except where individual HUF is carrying on a business or profession. अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो जाकर टीडीएस काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। टीडीएस का रेट आपका मेंशन होता है। कहां पर मेंशन होता है? फाइनेंस एक्ट में टीडीएस का रेट मेंशन होता है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑन व्हिच टीडीएस इज चार्ज्ड? इसके ऊपर चार्ज होगा सैलरी इनकम के ऊपर। आपका सैलरी है तो कौन टीडीएस काटेगा? आपका एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टीडीएस। विल डिडक्ट टीडीएस, एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टीडीएस। अरे मेरा वॉइस आ रहा है? तो हेलो,
ओके, सैलरी इनकम के ऊपर टीडीएस जाएगा। और किसके ऊपर? आपका पीएफ में कुछ पैसा डिपॉजिट है, उसके ऊपर टीडीएस आएगा। नेक्स्ट, और किसके ऊपर टीडीएस आएगा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आप कोई सिक्योरिटीज में पैसा डाले हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, उसके ऊपर टीडीएस जाएगा। आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो टीडीएस कौन कटेगा? रिलायंस कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर टीडीएस कौन कटेगा? रिलायंस कंपनी। डिविडेंड आपका बन रहा है 500, वो 500 नहीं देगा, 10% काट दिया, सपोज 450 देगा, 50 का टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वहां पर टीडीएस कटता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड प्रोजेक्ट, आपका लॉटरी उठा, क्रॉसवर्ड प्रोजेक्ट हुआ, वहां पर भी टीडीएस काटता है। अगर वो 10,000 से ज्यादा है, वहां पर टीडीएस 30% के रेट का कटता है। इसका मतलब आपका 1 लाख रुपए का लॉटरी निकला, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, 30% कट गया तो कितना? 30,000 कट गया, तो आपको मिलेगा कितना? 70,000, और टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा 30,000 का। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से आप कुछ पैसा कमाए, टीडीएस कटेगा कितना? 30%। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, टीडीएस कटेगा। इंश्योरेंस कमीशन किसी को मिला, टीडीएस कटेगा। पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन पेमेंट करोगे, सपोज जॉन्टी रोड्स आया, आईपीएल में खेला, उसको पेमेंट हो रहा है, तो आईपीएल वाला टीडीएस काट कर बाकी वाला पेमेंट करेगा। पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। इस तरह बहुत सारा चीज है जिसके ऊपर टीडीएस कटता है। म्यूचुअल फंड से कुछ मिल रहा है, उसके ऊपर टीडीएस कटता है। केबीसी, हाँ, टीडीएस कटता है। सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, इनकम फ्रॉम रेंट, इसके ऊपर टीडीएस कटता है। ठीक है बेटा, टीडीएस का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जीएसटी के ऊपर, पीपीएफ के ऊपर। जब विड्रॉ करोगे तो क्या होगा? टीडीएस कटेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? जीएसटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिटर्न। थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके बेटा। ठीक है, अभी मैं किसको एक पोस्ट करके सार आएंगे, वो क्लास करेंगे। बेटा कौन? अभिलिप्सा? अभिलिप्सा नहीं है सर। अजय सर आ चुके हैं सर। और सारा आ चुके हैं ना? हाँ, देवीदत्त सर को मैं होस्ट कर रहा हूँ, मेक होस्ट। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good night, sir. Good night. Thank you, sir. थैंक यू सर। A very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, ma'am. So I think what we
discussed in the last class, we must have been clear about that. As you know, we discussed about the cost concepts and the cost analysis in the last class, which is a part of the production analysis. Now, after knowing the consumer behavior through demand analysis and producer behavior through production and cost analysis, we need to move to the next best segment, which every business concern is confronted with. When you produce goods and services with the objective of minimization cost and maximization of output for the purpose of meeting the demands of your consumers, you need to move your product from the producer point to the consumer point. Because ultimately the products are meant for consumption by the consumer. So how the product will reach the consumer? When any business concern is over with the production process, completed the production process and produce the final goods and services which are supposed to be meeting the needs and requirements of the consumers. The question arises here, how the consumers will get the product, because the product is with the producers. So in that context, the producers need to move the product from producer's point to consumer's point. In this connection, we do have a distribution channel. Through distribution process, the producer distribute the product to the consumers. Directly the producer किंबा company आसिकी consumer को घरे घरे देई परिबो ना product. So को means through रे से product को consumer पाखरे पहुंचेबो. So means टाको basically हम कहू the process of distribution. A process of distribution ने जो माने सब रहिले participants like your dealer हुंतु, your distributors हुंतु, your wholesaler हुंतु, your retailer हुंतु. ये समझते all are considered to be a part of one big thing, which we generally call as the market. So generally, when the product is produced by the producers need a market through which the producer will distribute the product to the consumers. Therefore, it is mandatory on the part of every business concern who are supposed to be the producers that they need to be familiar with the concept of market, the structure of the market, and the conditions of the market. Why? Because market is not a unified thing. There can be different types of market in which you can sell your products, depending upon the nature of your product. Which product will be sold in which market, that as a producer, you need to identify. As a producer, you know what is the nature of your product. So accordingly, you have to identify which market is suitable for your product. So that to that market, you can distribute your product to the consumers. In that context, today we'll discuss about the market analysis. This is one of the important aspects in managerial economics, particularly in the microeconomics part of managerial economics. And throughout the market analysis, we'll try to find out what market is all about, what are the different types of markets, and how the products gets priced in different markets, and what is the decision of the producer related to pricing of the product and the quantity of output to be produced with the help of this market analysis. So we'll go on to discuss about the
market concept first. What is your view regarding market? Anybody voluntarily can speak. What do you understand by the concept of market? Kindly say something voluntarily. Anybody? Sir, Am I market audible or is a not? place. Yes, sir. So market is a place Uh, where goods are sold. goods are sold. Only goods are sold. So can you confine into a particular place? Is market confined to a particular place? ଗୋଟେ particular place କୁ ଖାଲି market କହିପାରିବେ କି market କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ particular place କୁ ବୁଝଉଛି ଆପଣ କହିଲେ ନା it is a place where goods are sold. It's not only goods, services are also being sold. ତ ଆର ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟା କରୁଛି କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗୁଡ୍ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ନ ଡେ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ବା ମଡର୍ନ ଡେ ବିଜନେସ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁଛୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟିଂ ବା ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ ସେଠି ତ କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଲେ ଅର୍ଡର କଲେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରୁ ହଉ କି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହଉ କି ହରିୟାଣାର ହଉ କି ତାମିଲନାଡୁରୁ ହଉ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ depending upon the geographical location as well as the speed of the services. ତ ସେଠି ଗୋଟେ particular place କୁ ଆମେ confine କରିପାରିବା କି as a market? କଣ କହୁଛନ୍ତି? Can we confine the concept of market to a particular place? No, sir. It could be virtual କାହିଁକି also. ନା ଆଜି ହଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବି ରହୁଛି କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଫିଜିକାଲ ମାର୍କେଟ ର ବି ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି ଯଦିଓ ଭର୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ମାର୍କେଟ ବି ରହୁଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ କେସରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ମାର୍କେଟ ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଭିତରେ କନଫାଇନ କରିପାରିବା ମାର୍କେଟ ଟାକୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କହୁ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ arrangement of what? It's an arrangement between the sellers and the buyers. କୋଉ ପ୍ରକାର arrangement ହଉଛି ନା where the products get sold against a specific price. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ arrangement ଟା ହବ between buyers and sellers, it must have to be on a regular interaction basis. So it's an arrangement where buyers and sellers meet on a regular basis to purchase or sell a product against some specific prices. ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଥିବ ବାୟର ସେଲର ଭିତରେ ବାୟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ସେଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି କେତେଗୁଡେ ଜାଗାରେ ସେଲର ସେମ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ବାୟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବାୟର ସେଲର ଭିତରେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବୋଲି କହିବୁ ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ମାର୍କେଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ବାୟର ସେଲର ଭିତରେ ଅନ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଇଜ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ମେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ନ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେଦିନ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି ସେଲର ବାୟର ଭିତରେ ଅନ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଯୋଉଠି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଥିବ ସେଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍କେଟ ତ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କାହା ଭିତରେ ହଉଛି ନା ବାୟର ସେଲର ଭିତରେ ହଉଛି କାହିଁକି ହଉଛି ନା ଫର ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ବାଇଂ ଅର ସେଲିଂ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ against some specific prices ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ହବ କି କିଣା ହବ ତା କୁହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରାଇସ୍
ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର। ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅର ଦ ବିଜନେସ କନସର୍ନସ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି through sharing the Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So market structure कौन कहले कौन बुझ structure of the market. So जेकोनोसी structure की अपन देखिए तार different components थे, तार components को नहीं होते structure theory. Here we are talking about the market structure. तो ये components कौन रहुଛି ना component रहुଛି जे buyer और seller निहात रूप रे रही थी, आउ depending upon the nature of the product, whether the products are homogeneous or the products are differentiated from each other, तापर मध्य आपनकर market structure टा depend करूଛି। आउ गोटे कंडीशन आसुची, सो गोटे आमे कहले नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, किंतु एठी गोटे जिंस आपण मन रखियो जे जेकोनोसी मार्केट की आमे कंसीडरेशन को नबा, इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट द नंबर ऑफ बायर्स आर ऑलवेज मेनी, सब बेले नंबर ऑफ बायर अधिक थान, नंबर ऑफ सेलर डिफर करि परंती डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ता कहउची जे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर मध्ये आपनकर डिफर करिवो। यदि होमोजेनियस प्रोडक्ट अछि मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहइबो, यदि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट अछि ताले मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहइबो। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट माने कोन बुझछु? Differentiated product means each and every individual product available in the market is different from the other on some grounds or the other. प्रत्येक प्रोडक्ट आउ जेकोनोसी प्रोडक्ट अवेलेबल अछि ताकू किछि ना किछि वे रे डिफरेंट हेछि। तेणु करी आमे एटा काहे की कहउछु ना बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आपण गोटे प्रोडक्ट नियंतु, सपोज आपण हैंडसेट नउछन, समस्त यूज करूछन मोबाइल फोन, तो डिफरेंट कंपनीज रहिछन जो माने की हैंडसेट मैन्युफैक्चर करी बिक्री करूछन। इवन भी कोटोटे कंपनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर करी बिकुछन। तो एठी हैंडसेट एज ए होल इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल प्रोडक्ट, किंतु जो डिफरेंट वेरिएंट्स आसी जाउची, वेराइटीज ऑफ हैंडसेट आसी जाउची, एठी सबु जाक डिफरेंट वेराइटी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर हैंडसेट्स। से साइज रे हो, से कलर रे हो, से फीचर्स रे हो, जोथरे जदि से बळे सब्स्टिट्यूट्स अछि ताले ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। सेति पे के कहउछि जे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जदि थिबो मार्केट, जोटा कि रियल मार्केट रे हम देखुछु, ताले मार्केट स्ट्रक्चर ता डिफरेंट होबो। थर्ड हम कहउछि जे गोटे सप्लायर रो बा गोटे प्रोड्यूसर रो कंट्रोल कोन रहउछि ओवर द आउटपुट और ओवर द सप्लाई। सप्लायर बा प्रोड्यूसर निजे डिसाइड करूछि ना इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड होउछि, तापर मध्ये डिपेंड करूछि आपनकर मार्केट स्ट्रक्चर। तो जोठी हम देखिबा इंडिविजुअली प्रोड्यूसर सेल करूछंती, every producer is different from the other, every producer is dealing with a different product, से जगह रे आपण कहि परिबे जे किछटा डिसीजन ऑन देयर ओन सेवन नउछन। बट जोठी 5-7 जन कि 15 जन कि 20 जन सेलर अछंती जो माने कि सेम प्रोडक्ट बिक्री करछंती, सेठी से माने ऑन देयर ओन डिसीजन नै तां कंट्रोल रे सेठी कम रहे। सो डिपेंड करूछि जे सप्लायर किंबा प्रोड्यूसर जे रहले तांकर कंट्रोल दा ओवर द आउटपुट और ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कौन रहउछि, ता ऊपर डिपेंड करछि आपनकर मार्केट स्ट्रक्चर। सिमिलरली गोटे सेलर रो कंसंट्रेशन कौन रहउछि, सेलर कंसंट्रेशन कहले बेसिकली बुझु व्हाट इज द पावर ऑफ द सेलर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेलर ऑन इट्स ओन कैन चेंज द प्रोडक्ट, कैन चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट। तो कितोडे जगह रे सेलर निजे होते
प्राइस चेंज करि पारे केतोडी जगह चेंज न करि पारे से अनुसार आपन मार्केट स्ट्रक्चर ता डिफर करे आउट आसु जे एंट्री कंडीशंस कोन रही जी चाइबो सी मार्केट भीतर को पसी परिबो ना नाही किछि रेस्ट्रिक्शंस रही लोक बा अदर प्रोड्यूसर मानक भाई टू एंटर इनटू द मार्केट. So these are the different components on the basis of which the structure of the market is built. And accordingly, we have different classification of market basing upon the nature of competition. এই जो structure ଆମେ କହିଲେ এই structure of market ଟା ଯେହେତୁ differ କରୁଛି because it depends upon many components and depending upon the components the structure of the market can differ. So overall, the market structure can be of two types. One is your perfect market structure, one is your imperfect market structure. और सबुतरे आपन कंपटीशन किछि किछि रहउछ. तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो टाइप रो मार्केट गोटे प्रोड्यूसर हिसाब रे आपन फेस करि परिबे जोटे की in due course of time depending upon the nature of your product you can decide which type of market is suitable for your product. So in that case, you need to have some sort of idea about the overall market structure. The co type of market सब अच्छी. जेहेतु हम कहले जे perfect market structure और imperfect market structure दी प्रकार market structure अच्छी. तो first of all, we need to differentiate between these two. Perfect market काहू कहबा, imperfect market काहू कहबा. Perfect market जला में market पढ़ुचे, market analysis देखुचे. Always remember the basic thing regarding market analysis is that market analysis is done for a single product. One particular product may market analysis for it. The product may be an individual product which we generally call as a mass product or it can be a class product. So perfect market कहले हमें कौन बुझू? So perfect market indicates if the price of a particular product is same throughout the market, then we can say the product is having a perfect market for itself. तो गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस जदी मार्केट रो सबु पार्ट रे इक्वली चार्ज होउथिबो कारण मार्केट ता आपनकर गोटे ब्रॉडर कांसेप्ट डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिक लोकेशन आपन मार्केट करि परिबे डिपेंडिंग अपॉन अदर थिंग्स आपन मार्केट को मतलब डिफाइन करि तो मार्केट कहले आपन कारण एछ गोटे प्रोडक्ट रो मार्केट कथा आपन कहू प्रोडक्ट ता इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज ए लोकलाइज्ड प्रोडक्ट जो गोटा लोकलाइज्ड प्रोडक्ट तांकर सही लोकालिटी रे रहू गोटी मार्केट but most of the products जोड़ा which we generally call macros as consumers they are not localized products. The product is being available in all parts of the market. The market is a broader concept. Perfect market I would say in case of a particular product if the price of the product remains the same throughout the different parts of the market then we can call it as a perfect market. तो आजिकल का जुग रे एमती का मार्केट पाइबा एक्चुअली कष्ट है. It's very rare to find such market. Perfect market. कारण गोटे प्रोडक्ट जोटा कि सेम प्राइस रे ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होतबो आपनका भुवनेश्वर रे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होतबो पुरी रे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होतबो कोलकाता रे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होतबो दिल्ली रे बट सेम प्राइस रे बिकु एडा केबे हेले हबो नाही इट बहुत रेयर टू फाइंड द परफेक्ट मार्केट. So what matters for us is the other type of market structure which we call as the imperfect market. So imperfect market हमें कहाँ पूछे? Now a product is supposed to have imperfect market for it if the price of the product is different in different markets or in different parts of the market. Market रो different part रे यदि product रो price टा different रहुची ताले हम कहि परिया product is having an imperfect market. So generally the market we come across is in the form of an imperfect market. तो एठी जो हमें classification कले on the basis of competition जो परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कथा कहली ता अंडर रे आपनकर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आसीला. ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो आसुची एटा को टाइप रो मार्केट एटा हम नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा. ऑन द अदर हैंड यदि इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कथा कहली ताले इम्परफेक्ट मार्केट अंडर रे तीन प्रकार मार्केट हमर आसुची.
गोटे हूँ आम मोनोपोली मार्केट, गोटे हूँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, गोटे हूँ ऑलिगोपोली मार्केट। So each चारिटा market actually is considered to be the classification of the total market structure. So either you can sell your product in a perfect market or perfectly competitive market, or you can sell your product in a monopoly market, or you can sell your product in a monopolistic competitive market, or you can sell your product in a oligopoly market, depending upon the nature of your product and depending upon the seller's concentration or availability of the number of sellers. So आ भितर को टाइप रो मार्केट एक्चुअली वी कम अक्रॉस इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन सेटा हम देखिबा। ना कमिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, हम केते गोटे यार फीचर्स नै छै जे गोटे प्रोडक्ट पई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट केते एग्जिस्ट करे ना जल्दी तार नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज छै और प्रोडक्ट ता गोटे होमोजेनस प्रोडक्ट छै ता माने इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट सेम प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट if is being sold in all parts of the market, ताले से प्रोडक्ट हम कह दियो ऑलरेडी मार्केट है जहां कोन सी प्रकार आसुची परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्टेंस पे जो हम कहछि जे चाहेबो से एंट्री कर परिबे मार्केट फ्री एंट्री रहउछबो और जल्दी गोटे फार्म किबा कंपनी लॉस होउची से जेतले चाहेबो सेतले मध्ये एग्जिट कर सो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रहइबो इन फार्म कौन सी प्रकार गवर्नमेंट रेगुलेशन नथिबो और जो सब सेलर्स रहिले जो माने जो सब फार्म एटी ऑपरेट करूछंती आज सेलर्स आज प्रोड्यूसर्स all the farms are supposed to be price takers. Price takers माने they don't have any control over the price. से माने निजे निजे price fix कर करिए नहीं जहाँ price industry रे fix हबो सेही price ता impose हबो on all the farms. काहे कि ना हम कहउछे जे perfect market रे price of the product remains the same throughout the different parts of the market. ସେଥିପାଇଁ କି ଯିଏ ବି ସେଲର ଆସୁ ଏ ମାର୍କେଟ କୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଉ ସେମ ପ୍ରାଇସ ରେ ବିକ୍ରି କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ ଟା ସେମ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଫାର୍ମ ର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହେନି ଓଭର ଦ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓଭର ଦ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଫ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ देयर इज नो सेलर कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हार्ड होची जे जो माने सब कंज्यूमर रहिले से माने आगुआ सब जिनिस जानि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस मार्केट रे को प्रोडक्ट बिक्री होची केते पैसा रे बिक्री होची से आगुआ जानि थिबे कंज्यूमर में से अनुसार प्रिपेयर हेकि सने दिबे आउ गोटे होची जे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एठी लिखा है दैट मींस जो सब इनपुट यूज होची सेटा गोटे जगह रो आगो जगह को इनके परफेक्टली मूव करतो तो जनरली ये जो परफेक्ट कंपटीशन ऑफ अवेलेबल मैं आपको कहल जे रेयरली फाउंड इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स यदि आपण शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करछुंती जेतो हम पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बिली कहउछु तले सेठी आपण देखिबे जे परफेक्ट कंपटीशन होउछ तेनु जदि गोटे शेयर रो प्राइस 100 टंका हैला आपण पुरी रे थांतु आपण भुवनेश्वर रे थांतु आपण कटक रे थांतु आपण कोलकाता रे थांतु आपण दिल्ली रे थांतु सेम प्राइस रे आपण ताकू किनि परिबे आउ केते गोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट केस रे मध्ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट देखा दे किसके कहले जे रेयरली फाउंड सब केस रे हम देख करबा जेतले प्राइसिंग डिसीजन कथा आसुची एथे हम ऑलरेडी कहले जे जे सेलर रहला से गोटे प्राइस टेकर तार निजर कोनोसी कंट्रोल नाही ओवर द प्राइसिंग डिसीजंस तो एठी प्राइस ता ताले डिसाइड होची कोठी ना एट द इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्री का हम कहउचे ना बहुत गोटे फार्म मिसी की इंडस्ट्री क्रिएट करछ कारण सब जगह फार्म जेतु होमोजेनस प्रोडक्ट रे डील करछन्ते आइडेंटिकल प्रोडक्ट रे डील करछन्ते तो सेही प्रोडक्ट पे जो इंडस्ट्री रहिछि से इंडस्ट्री डिसाइड करिवो बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट at what price the product will be sold so that that price will be acceptable by the consumer as well as by the producers. तो मार्केट कंडीशन रे बा मार्केट स्ट्रक्चर रे
गोटे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट हमर आस्पी जा हम कहूछु इक्विलिब्रियम aspect by equilibrium concept, and every producer needs to attain equilibrium in the market in whichever market the producer is operating. तो परफेक्ट कंपटीशन जब हम प्राइसिंग कथा आसुचे आमे कहूचे जे प्राइसिंग ता फिक्स है एट द इंडस्ट्री लेवल ले जो प्राइस फिक्स हुए, the industry takes into consideration the total demand for the product and total supply of the product, and where the total demand and total supply are equal, that point is known as your equilibrium point. Corresponding to the equilibrium point, the price is being fixed by the industry. एटी जो आपण देखुचंती पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जोठी हमें y एक्सिस रे प्राइस नै जो x एक्सिस रे आउटपुट नै जो बा क्वांटिटी नै जो डी कर्व ता आपनकर डिमांड कर्व को इंडिकेट करूची, एस कर्व आपनकर सप्लाई कर्व को इंडिकेट करूची. तो सेमान को जगह रे एकठी हिसंती at point E, because see point E रे intersect करूछंती डिमांड और सप्लाई कर्व. So point E ता our equilibrium point. Corresponding to the equilibrium point, जब हमें line को draw करूची to touch the y axis where we are showing the price, तो जो point रे touch कला y axis को तो ये प्राइस ता आपण फिक्स करू. तो एठी ओपी प्राइस आपण फिक्स करू इंडस्ट्री लेवल पे. सेही ओपी प्राइस रे ही प्रोडक्ट बिक्री हबो बाय ऑल द फार्म्स व्हिच आर अंडर द इंडस्ट्री. कारण सब जाक फार्म आर कंसीडर टू बी प्राइस टेकर्स. एठी फार्म निजे ताकर प्राइस डिसाइड कर परिबे नाही. तो इंडस्ट्री लेवल रे एटा फिक्स अप होची. ईटा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहला, ओपी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस रहला, आ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ता माने केते मिनिमम आउटपुट आपण प्रोड्यूस करिवि टू सस्टेन इन द मार्केट, सेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. तो मिनिमम ओएम आउटपुट आपण प्रोड्यूस करिवि आ ओएम आउटपुट को एट ओपी प्राइस पर यूनिट आपण बिक्री करिवि, ताहले इक्विलिब्रियम आपण अटेन करिवि. किंतु जेतବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା इंडस्ट्री केस रे ଆମେ डिमांड सप्लाई को नेकी देखिए, किंतु जेतବେଳେ आपण फार्म लेवल को आसीबे, फार्म तो ई प्राइस रे बिक्री करिवो, तापे ई प्राइस ता फिक्स हे गला. तो सी तार इक्विलिब्रियम केतळे पाइ फार्म लेवल ले इक्विलिब्रियम केतळे आसे जेतळे आपनकर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो. तो मार्जिनल रेवेन्यू टा कोन जोटा हम कहूची जे एडिशनल रेवेन्यू केते हम जनरेट कले बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. मार्जिनल कॉस्ट टा कोन ना हमें केते एक्स्ट्रा कॉस्ट बा एडिशनल कॉस्ट बियर कले इन प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. जो काले आपण कहते जेति की खर्च आपण करूछंती फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, जदि आपण सेति की रिकवर कर देबे ताले इक्विलिब्रियम आपण अटेन करिवे. ता ऊपर को जदि आपण रिकवर करूछंती ताले आपण प्रॉफिट रे रहले, और त तळ को जदि कवर करिवे ता माने किछिटा लॉस आपण सो. तेरे जो प्राइसिंग रहला, ए प्राइसिंग ता परफेक्ट कंपटीशन में दी प्रकार प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम देखिए. गोटे प्रोडक्ट कैटेगरी में हम कहूची पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. पेरिशेबल प्रोडक्ट माने जहार लॉन्गिविटी ता बहुत कम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन तो तार शॉर्ट पीरियड, कारण से शॉर्ट पीरियड परे सेही प्रोडक्ट रो आ कोनसी यूटिलिटी रहबो ना, यूज रहबो ना, लाइक फ्रूट्स हो कि वेजिटेबल्स हो. तो ए जगह रे आपनकर सप्लाई ता लिमिटेड हो, कारण जेहेतु पेरिशेबल गुड्स आपको आपण अधिक दिन स्टोर करके रखि परिबे नाही. तेणु कमोडिटी को जेमिति हेले आपको बिक्री करिया पड़िबो. तेणु जेतिकी आपण प्रोड्यूस करछथि सेतिकी आपको सप्लाई करिया पड़िबो. तो यदि सप्लाई कर्व ता आपनकर आसी गला एसएम, जोटा कि बेसिकली वर्टिकल टू द वाई एक्सिस. डिमांड कर्व टणाई जेति ओरिजिनल डीडी कर्व, तापरे डिमांड जदि बढ़ी जी D1 अछि, डिमांड कमिला रे D2 अछि, अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम तीनटा डिफरेंट पॉइंट रे आसुची. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम रे आपण ओपी प्राइस फिक्स करथिले, जदि डिमांड बढ़िला आपण प्राइस बढ़ेबे, कारण इंडस्ट्री प्राइस बढ़िबो डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीमेंट इन डिमांड. जदि डिमांड कमुची आपण प्राइस कमुची. एटा पेरिशेबल गुड केस. और नॉन पेरिशेबल गुड केस रे कोन होबो ना आपनकर सप्लाई ता किछि बाट अपवर्ड स्लोपिंग रहइबो, ता पर इट बिकम्स कांस्टेंट. जेतो आपनकर देखै जी फर्स्ट ईयर रे आर आ एस को नै आर एस एटा देखिए आर रु ई जाय आपनकर इंक्रीज करके जाईची कर्व ता,
E ଠୁ S ଯାଏ ସେଟା ଷ୍ଟାଗନାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ଲାଇଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ। So if price is very high, the seller will sell the whole stock. If price is low, the seller will not sell any amount in the present market period, but will hold back for some better time. କାରଣ non perishable କୁ ତାକୁ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆର longevity ଟା long period of time ପାଇଁ ଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆର ୟୁଟିଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ below which the seller will refuse to sell is called the reserve price. ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଥିବେ, ତା ତଳକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ବିକିବେ ନାହିଁ। ତ ପେରିସେବୁଲ ଆଉ ନନ୍ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ କେସରେ ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ଏଇଭଳିଆ ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ। ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ କେସରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସପ୍ଲାଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ୟୁଟିଲିଟି ପିରିୟଡଟା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ସେତିକି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ହବ, ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ହବ। ଏଠି ନନ୍ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲି ଯେ ସପ୍ଲାଇଟା ଏଠି କିଛି ବାଟ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କରି ଯାଇପାରିବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ଲାଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ବଢିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି, ତ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସଟା ବଢି ବଢି ଯିବ। ଏତିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ। ତାପରେ ଆସିছে ଆମେ ମନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ। ମନୋପୋଲି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? Mono means what? One. Poly means seller. So monopoly basically is referring to a market where there is the existence of only one seller or single seller. ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅପରେଟ କରୁଥିବ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ is having a monopoly market. This is also considered to be an extreme market condition because in today's real world situation, it is very hard to find a monopoly market. କାରଣ monopoly market ରେ ଯୋଉ product ଟା sell ହବ, that product doesn't have any close substitutes of it being available in the market. That product is a unique product in itself. Suppose ଆମେ କହୁଛି ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଝିରେ ଦଉଥିଲି। ତ ଆପଣ ଯଦି ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ୟୁ ଆର୍ ସପୋଜ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେବେ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ନାହିଁ, ବିକଜ ୟୁର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ବି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଏ ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ। କିନ୍ତୁ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋନୋପୋଲି ଆଗୁଆ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କେସରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ opening of the market through your LPG system all over the world since 91 onwards, बहुत rare product ଆପଣ ପାଇବେ ଯାହା କି monopoly market ରହିଛି। That's why we call it as an extreme market condition. So monopoly market ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ seller ଗୋଟିଏ ରହିଲା, farm ଗୋଟିଏ ରହିଲା, that's why whichever is the farm or whoever is the seller, that farm, that company acts as the industry. ସେ ନିଜେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ତାର କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟର ହିଁ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ସେଲର ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅଲ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ରେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ସେଲର। କାରଣ ଯିଏ ଫାର୍ମ ସିଏ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ଡିସାଇଡ୍ କିଏ କରିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ? ସିଏ ଫାର୍ମ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଲର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ସେଲର ଟୁ determine the price of the product is very high in monopoly market. Monopoly market रे जेहेतु फार्म जी इंडस्ट्री सी, सो फार्म लेवल ले भी डिसीजन होउची। तो एठी इक्विलिब्रियम केमिति पाओ? कारण हम कहले ना, जे कोनोसी मार्केट कंडीशन में भी आपण ऑपरेट करंतु, योर इंटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो एठी इक्विलिब्रियम ता केतळे पाइबो ना, फार्म ना जेहेतु फार्म इंडिविजुअल अछि, गोटिए अछि, सी तार इक्विलिब्रियम अटेन करिवो जेतळे आपनकर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कंडीशन फेस्ड बाय द फार्म आर इक्वल। MR equal to MC हेले इक्विलिब्रियम
पाइबो। तो एठी हमें तीनटा केस देखिए गोटे केस रे लिखा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, गोटे केस रे लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट, गोटे केस रे लिखा है लॉसेस। तो आपण एठी कहबे लॉसेस काहे देखिले, कारण मोनोपोली मार्केट गोटे सेलर प्रोडक्ट रो कौन सी क्लोज सब्स्टिट्यूट नाही, ताମାନେ से जो प्राइस रे चाहे से प्राइस रे बिक्री करबो, तार लॉस काहे कि। तो ये जो तीनटा एक फिगर हमें देखिए এটা एक्चुअली रिलेटेड टू द शॉर्ट रन। जे तमे प्रोडक्शन ने पढिथिले जे प्रोडक्शन एनालिसिस ता बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, तेणु प्रोड्यूसर जेतले गुड्स बिक्री करूची बा सर्विसेज बिक्री करूची, से देखियो जे मु शॉर्ट पीरियड रे करूची ना लॉन्ग पीरियड रे करूची, कारण तार प्राइसिंग डिसीजन ता डिफर करिवो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। तो जेतेबेले भी आमे प्राइसिंग डिसीजन देखौचे आउटपुट डिसीजंस रिलेटेड किछि फिगर देखिबा, we need to show it in terms of time period, short run में केमती होची, long run में केमती pricing होची। तो ये जो तीनटा का फिगर हमें देखैछि related to monopoly market pricing, ये तीनटा का फिगर basically is related to the short run। so short run में हमें कहले any of these three conditions can be faced by the monopolist or by the seller। it may earn supernormal profit depending upon its cost condition and revenue condition, it may earn normal profit, or it may have to face with some losses। तो लॉस कहीं के हम एट क्वेश्चन आसीबो जेतु गोटिए सेलर रहउची तार लॉस कहीं के हम, तार तो कौन सी कंपटीटर ना सी जो प्रोडक्ट डील करची से प्रोडक्ट तो गोटे यूनिक प्रोडक्ट, तार कौन सी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं, तार लॉस केमिति हम हम एटी कहूची शॉर्ट रन में लॉस। कारण जेतेबेले हम कहूचे जे the seller is having all the control to decide about the price, we have to understand the fact that the seller cannot set the price arbitrarily। कारण आपण प्राइसिंग जो प्रोडक्ट रो करिवे, you need to take into consideration the purchasing power of your consumers। कंज्यूमर आपनकर जे अछंती प्रोडक्ट रो कंज्यूमर जे माने जहा को आपण आइडेंटिफाई करछन एज प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, सेमानकर परचेजिंग कैपेसिटी कोन, ताकू बेस करके आपन प्राइस फिक्स करिया पड़ियो। मन इच्छा प्राइस कर दोसबे, कंज्यूमर जो माने अछंती ताकर परचेजिंग कैपेसिटी ऊपर को से प्राइस जाउची, तो से माने किरबे नाही। कारण आपण प्रोडक्ट तयारी करछन आपण जानछन आपण किसी सब्स्टिट्यूट नाही, जेमितिली प्रोडक्ट मोर बिक्री हवा दरकार, किंतु आपण प्राइस टाको एबेला जति हाईली सेट करिवे जोठी कोनोसी कंज्यूमर इज नॉट इन ए पोजीशन टू परचेज द प्रोडक्ट, तो आपण डिमांड जीरो हिजो, डिमांड कम हिजो, तो रेवेन्यू बढ़िया परियो तो रेवेन्यू कम हिजो। तो लॉस टा काहे की होची ना शॉर्ट रन में बेले बेले कोन है जेतले हमें डिपेंडिंग अपॉन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर हमें डिसाइड करू प्राइस का। so sometimes it might happen, although always it doesn't happen, but sometimes it might happen that the price might be set at such a level whereby the seller might have to face with minimal loss, कारण तार cost condition टा might be higher right थाई परे as compared to the revenue condition। कारण से प्राइस फिक्स करले ही रेवेन्यू कंडीशन पर आसीबो। हमें को जे प्राइस टाको से डिपेंडिंग ऑन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर से प्राइस फिक्स करूची, जब देखिला परचेजिंग कैपेसिटी कम अछि से कम लेवल ले प्राइस टाको फिक्स कला, तर कॉस्ट अधिक अछि तो से लॉस है। 근데 लॉस टा गोटे जिंस मन रखिया जे मिनिमल बाय नेचर, इन द सेंस दैट मिनिमम लॉस से सही पारे चांस अछि, इट्स नॉट दैट कि समस्त शांति, बट चांस अछि minimum loss is sahipare short run, but with that loss the producer is supposed to continue production, because whatever loss the producer has faced in the short run, the producer knows it better that it can make up for that loss while it moves to the long run। the long run को move करियो कारण तार के कंपटीटर ना जेम चले से long run को जीवो, जो long run को move करिवो ए लॉस का वाइप आउट हो जिवो, से प्रॉफिट में प्रॉफिट ना सब बेले। तो लॉन्ग रन में जे देखिबा मोनोपोलिस्ट रो केबे हेले भी लॉस हबो नै, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट सब बेले प्रॉफिट नउची, बट शॉर्ट रन में चांस अछि, चांस अछि डजंट मीन दैट जे समस्त लॉस हन, कारण बहुत मैक्सिमम केस रे आपण देखिबे जे माने प्रॉफिट नै कि जान। आउ जोडे केस जो देखले गोटे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गोटे नॉर्मल प्रॉफिट, आ भीतर डिफरेंस कोन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ता होची एक्चुअल रियल प्रॉफिट जोटा हमें पाउची जदि आपनकर रेवेन्यू कंडीशन टा इज हायर देन द कॉस्ट कंडीशन,
then you are supposed to attain supernormal profit. ଯାହାକୁ ଆମେ abnormal profit ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉଟା real sense of profit ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। Normal profit କୋଉଟା ନା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର cost condition and revenue condition are the same। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି production ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କର ପରଚେଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ସେୟା ଅଛି। ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲା କାଲି ପଢିଥିଲେ, while estimating the cost of production we need to take into consideration the implicit cost along with the explicit cost। explicitly ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତାକୁ ନବା, ତା ବାଦେ implicit cost ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ hidden cost ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ consideration ନବା to understand the real profit, to find out the real profit or loss। ତେଣୁ implicit cost ଟା ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ, hidden cost ଟା ଯୋଉ cost ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ actually ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ସେଟା ଆମ ପକେଟ ରୁ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଓନର ମ୍ୟାନେଜର କଥା କହିଥିଲେ, କିମ୍ବା ନିଜର ଜାଗାରେ ତମେ ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛ କିମ୍ବା ନିଜର ଅଫିସ କରିଛ ଯୋଉଠିକି ରେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଟୁ କନସିଡରେସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ କଷ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇଛି, so we are also covering the implicit cost। ସେଇ 100 rupees ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ explicit cost implicit cost ମିଶିକି 100 rupees, ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ 100 rupees ରେ, କିନ୍ତୁ implicit cost ଟା ଆପଣ actually out of pocket ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର, ବା ଆପଣ actually bear କରିନାହାନ୍ତି। so for that ଯେହେତୁ ଆପଣ bear କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ୟାକୁ नो ପ୍ରଫିଟ नो ଲସ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁଛେ, we generally take into consideration both explicit and implicit cost, and since for implicit cost we have not paid a single pie which we could have spent, so we are recovering that through selling of our product। that's why this entire scenario is known as your normal profit। ତେଣୁ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଆସିପାରେ ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟରେ, ଆଇଦର ଆମର ସୁପର ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ସର୍ଟ ରନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ କୁ ଯିବ ସେ ଦେଖିବ ଯେ କେହି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଲର ରହିବ, ତାର କେହି କମ୍ପିଟିଟର ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କୌଣସି କ୍ଲୋଜ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ରେ ସେ ପ୍ରାଇସକୁ ଏଭଳିଆ ଫିକ୍ସ କରେ ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ନବ। So generally long run ରେ the monopolistic firm strive କରିବ and ସବୁବେଳେ earn କରିବ profit। he may also practice price discrimination। ଏଠି price discrimination ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି monopoly market ରେ। so price discrimination is possible only when there is a monopoly market। price discrimination ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? price discrimination basically refers to the practice of charging different prices for the same good to different buyers in different markets। ସେଇ same product ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ different price charge କରିପାରୁଛନ୍ତି to different consumers in different markets, then you are discriminating the price of your product। ସେ price discrimination ଟା possible ହବ ଏଇ monopoly market। ବୁଝିପାରିଲେ? So selling his product in foreign market at a price lower than his own market is itself referred to as dumping। dumping ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫରେନ ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, you are a monopolist in your own country, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଡମ୍ପିଂ। ୱାର୍ଡ ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ, ଡମ୍ପିଂ arises in case of foreign trade only। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରାଇସିଂ ଅଣ୍ଡର monopolistic competition ରେ ଯେ group of producer producing same but not identical product compete with each other। ଏଇଟା monopolistic competition। ତ monopoly ଆଉ perfect competition ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, are extreme market conditions। extreme market condition ଯେହେତୁ ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି real world ରେ ଏଇ ଟାଇପର ମାର୍କେଟ ପାଇବା କଷ୍ଟ। perfect market ହଉ କିମ୍ବା imperfect market, ଏଇ ଯୋଉ monopoly market, ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ମାର୍କେଟ real world ରେ। that is the reason why ଆମକୁ find out କରିବାକୁ ପଡିବ what is the real market that as consumers we all are being faced। so for that we need to understand the monopolistic competitive market and the oligopoly। ବୁଝିପାରୁଛ?
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝି ହଉନି? ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝି ହଉନି? ହ୍ୟାଲୋ, सादरे टिके रिपीट करिए बुझिलेन ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आउ जो मोनोपोली मार्केट हम डिस्कशन कले मु कहया कथा जी दीटा को मार्केट होची एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन हमें देखिले जे these two types of market are rarely to be found तेणु आम ପାଇଁ ଏଟା ଏତେ मैटर करिवो नाही because we need to identify the market to which we all are being exposed to आज consumers हमें जो मार्केट को एक्सपोज देके अछु हमहु सेही मार्केट विषय जानिया पड़िबो तो चारिटा मार्केट टाइप भितर जोड़े मार्केट टाइप हम जो पढ़िले वर्तमान सुधा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट हमें कहूचे जे दीटा कहूचे एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन एटा बहुत रेयर केस रे देखा जाए तेणु एई दीटार इंपोर्टेंस आम पे एते नाही तेणु आम पे कहार इंपोर्टेंस रही ना आउ जो अदर टू टाइप्स ऑफ मार्केट रहला जोडा की पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट आस तादरे गोटे होचे आपनकर मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट आ गोटे होचे ऑलिगोपोली ये दीटा का मार्केट रियल वर्ल्ड रे हम देखु जो मार्केट को आपण फेस करूछंदी आपण एक्सपोज देके असंती से मार्केट ता आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट थाई पारे किंबा ऑलिगोपोली मार्केट थाई तो आंको भीतर कोन डिफरेंस रहउची आ प्राइसिंग केमिति मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रे आ आपनकर ऑलिगोपोली मार्केट रे फिक्स होउची तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट ये जो वर्ड हमें कहूचे it is a combination of the two extreme market conditions एतरे किछिटा मोनोपोली भी रहियो आउ किछिटा कंपटीशन भी रहियो मोनोपोली रे हम कहले कंपटीशन किछि नै गोटी सेल एठी हमें कहूचे किछिटा मोनोपोली रहियो बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी रहियो सेही टाइप रो मार्केट हमें देखुचे तो एठी कोन होउची ना बहुत गुडे फार्म ऑपरेट करूछ मार्केट रे but all firms are dealing with product differentiation. So the differentiated product is considered to be an important component of monopolistic competitive market. So each and every individual seller, each and every individual producer is coming out with a product which is in some way or the other different from that of their competitors' product. सबू प्रोड्यूसर माने एमिति का प्रोडक्ट नहीं के आसीबे जोटा की एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बा तार कंपटीटर प्रोडक्ट हो किछि वे रे जेमिति ने डिफरेंट हेछि सेटा को हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहू तेनु जो जगह रे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रही छी सेही टाइप रो मार्केट सेटा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रे ही सेल ही पारि जेमते हम कहली प्रथम सपोज हम रेगुलर बेसिस रे टूथपेस्ट यूज करू So toothpaste as a whole is a product. In the America, there are different FMCG companies which are producing toothpaste. Even one single company can come out with many variants of toothpaste. तो आपनकर जदी पॉकेट साइज सपोज अछि जे टूथपेस्ट रे आपण 100 टका खर्च करछिली पर मंथ आपण 3 जण मेंबर अछि कि 4 जण मेंबर अछि फैमिली रे आपण 100 टका खर्च करी तो सेही 100 टका रे आपण मार्केट को जाउछंदी आपनक पाखरे नंबर ऑफ टूथपेस्ट आर अवेलेबल आपण ता भीतर पिक एंड चूज करिवे सेही 100 टका रे कोलगेट जिंस पाइबे सेही 100 टका रे पेप्सोडेंट पाइबे सेही 100 टका रे अदर कंपनी रो मध्य प्रोडक्ट पाइबे जोडा कि सेम प्रोडक्ट कैटेगरी रे अछि किंतु सब प्रोडक्ट इन सम वे और द अदर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तेनो एठी जो माने बिजनेस करिवे ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रे माने गोटे जिंस देखिया पड़िबो जे they need to aware their customers that their product is in some way different from the other existing product. कस्टमर को मन भितर से अवेयरनेस टा आपन क्रिएट करिया पड़िबो सेटा केमिति करिवे सेटा थ्रू केमिति करिवे थ्रू advertisements थ्रू एडवर्टाइज यस थ्रू एडवर्टाइजमेंट जाका हम प्रमोशन लेली को तेणु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रे apart from product differentiation
आउ गोटे मेजर एस्पेक्ट होउची से एतरे एडवर्टाइजमेंट टा नेसेसरी advertisement is necessary in monopolistic competitive market कारण advertisement through रे आपण आपण प्रोडक्ट को प्रमोट करबा संगे संगे कस्टमर मानकर माइंड भितरे अवेयरनेस क्रिएट करिवे जे योर प्रोडक्ट इज इन सम वे और द अदर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट or your product is having some sort of competitive advantage over its competitive products एटा आपको देखिया पड़िबो आपण मन टीवी देखुवे केते गोटे प्रोडक्ट अछि जोडा कि एज ओल्ड प्रोडक्ट माने बहुत वर्ष हेलाने से प्रोडक्ट पाइछि एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट स्टिल देन सेने एडवर्टाइजमेंट करूछन बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द एडवर्टाइजमेंट कारण एडवर्टाइजमेंट आपण जे करबे दैट शुड बी अपीलिंग टू द कस्टमर्स तेनु केते गोटे जगह कहबी आपण खर्च करूछन एडवर्टाइजमेंट रे इफ दैट इज नॉट अपीलिंग टू द कस्टमर्स आपण पूर्ण थरे चेंज करिया पड़ुछि सपोज आपण गोटे प्रोडक्ट डील करछन जोटा कि यूथ मानक पई अछि आपण सेटा को जदी प्रमोट करूछन थ्रू ए ब्रांड एम्बेसडर हु इज एन ओल्ड पर्सन यूथ माने एसोसिएट करि परना देता तांको संगे निजु तो सेठी आपण एडवर्टाइजमेंट फेलियर हि तो आपण देखिया पड़े जे को टाइप रो प्रोडक्ट तयारी करछन एंड हु आर योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ताको बेस करके आपण आपनकर प्रोडक्ट रो एम्बेसडर चूज करिवे किमा प्रोडक्ट रो डिजाइनिंग एमति करिवे जेंति सेटा अट्रैक्ट करूथबो सही सेट ऑफ कस्टमर को जो मन को आपण परसीव करछन एज योर टारगेटेड कस्टमर्स केते गोटे प्रोडक्ट अछि जोडा केवल छोटो पिला पई केते गोटे प्रोडक्ट अछि जोडा ओल्डर पर्सन मानक पई केते गोटे प्रोडक्ट अछि जोडा यूथ मानक पई केते गोटे प्रोडक्ट अछि जोडा फैशनेबल प्रोडक्ट को से देखिया वुमेन मानक पई वुमेन मानक भितर भी सेग्रीगेशन रहिछि तो एडवर्टाइजमेंट आपण केमिति करछन सेटा आपन ऊपर डिपेंड करूछि कारण से एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे यू हैव टू शो to the prospective customers that your product is somehow different from the other existing products. So apart from product differentiation, एठी हमें कहले monopolistic competitive market रे advertising is a must. Third होची जो product differentiation हमें करूचे that means जदि नुआ if as a new entrant we want to enter into the market the नुआ producer हिसाब रे हमें market रे entry करिया को चाहू छु तो we have to come out with a product whereby the product in some way or the other has to be different from the other existing product. तो सेटा केमति करे आपण गोटे प्रोडक्ट लॉन्च करिया जाउछन आपण माइंड भितर अछि जे ए प्रोडक्ट ता जेमति अदर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाहर जो सब कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट छै ताको टू केमति टिके अलगा देखा दी आ केमति टिके अलगा रही और किछटा यूनिकनेस रखिया दरकार तो सेति पय कि आपण को स्टडी करिया पड़ियो आपण को कॉम्पिटिटर को प्रोडक्ट की ताकू स्टडी करी कि कोन नुवा जिंस आनिले आपण प्रोडक्ट यूनिकनेस आसीओ सेटा आपण बाहर करिया पड़ियो सो फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर आपण देखिए जे प्रत्येक कंपनी रे गोटे विंग थाए जे आपण को आरएनडी विंग से विंग काम करे एई पर्पस के जे थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मन को डिजाइन करिया पड़ियो जे हम प्रोडक्ट ता केमिति हेले इट विल लुक somehow different from the other existing product size रे चेंजेस करिवा कि कलर रे चेंजेस करिवा कि अदर किसी फीचर्स रे चेंजेस करिवा ए टाइप रो बेले बेले कोन होई कि सपोज आपण जाइथिबे गोटे प्रोडक्ट किनको सेम फीचर सब थिबो कि कलर रे चेंजेस आइथिबो कोडा ब्लैक थिबो कोडा व्हाइट जाको ब्लैक पसंद से ब्लैक मिला जाको व्हाइट पसंद से व्हाइट मिला कि देखि सब जाको समान अछि केवल कलर रे डिफरेंस अछि मींस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हे गल ते दिटा को डिफरेंट प्रोडक्ट हिले कारण कलर रे डिफरेंस अछि आउ केते जगह रे सेम प्रोडक्ट आसी पारे किंतु लोक मानक मन भितर आपण को डिफरेंस क्रिएट करिया पड़े तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कथा कहले प्रोडक्ट ता ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट existing in the market either in real sense or in imaginary sense रियल सेंस रे माने जोटा आपनकर नेकेड आई को देखा जाउछु कलर रे चेंजेस आसिला साइज रे चेंजेस आसिला इबा तारो फीचर्स रे किछि चेंजेस आसिला सेबडा देखा जाउछु आखि इमेजिनरी चेंजेस माने एका देखा जाउथबो किंतु जो डिफरेंस ता अछि सेटा खाली आखि की देखा जाउ सेटा आपनकर कस्टमर रो माइंड भीतर अछि जोटा कि एडवर्टाइजमेंट थ्रू आपण पुरै छै So imaginary difference of your product from other existing product you can create through advertisement in the minds of your prospective customers. सेति पे हम कहले जे एडवर्टाइजमेंट ता मध्ये एठी नेसेसरी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट
तो ये एमिति टाइप रो मार्केट जोठी की लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहिबे कारण कंपटीशन रहउछि हम कहले ना एटा होछि कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन तेणु कंपटीशन रहया पई नंबर ऑफ सेलर्स हैज टू बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहिले ऑन द अदर साइड मोनोपोली कथा काई कहउछि मोनोपोली कथा इच पे कहउछि जे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज डीलिंग विथ ए प्रोडक्ट व्हिच इज in some way or the other different from the other product. That means it has some sort of uniqueness of it. जेहेतु uniqueness किछि रहुछि तेणु एठी सेलर जे रहिला कि चाहिले किछि ता अफेक्ट करि परिबो तार प्राइस एठी इंडस्ट्री जे प्राइस डिटरमिनेशन हबो नाही प्राइस ता डिसाइड हबो बाय द सेलर taking into consideration the competitor strategy the seller has to come out with a proper pricing strategy ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କିଛିଟା ମୋନୋପୋଲି ପାୱାର ରହିବ କିଛିଟା ମୋନୋପୋଲି ପାୱାର ରହିବ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ହଉଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ ଦ ସେଲର ଆର୍ ହାଭିଂ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ ମୋନୋପୋଲି ପାୱାର ବିକଜ ଦେ ହାଭ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ अबाउट ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଦେଖେଇଛେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପ କଥା ଲେଖିଛେ ଲିରିଲ ହଉ ଲକ୍ସ ହଉ ଡୋଭ୍ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ବାଥ୍ ସୋପ ସବୁ So soap, bath soap as a whole is a single product. কিন্তু যেহেতু এটি আপনাদের চেঞ্জ হয়ে যাইছি ব্র্যান্ড ସବୁ তো ব্র্যান্ড রে চেঞ্জেস হেলে ମଧ୍ୟ আপনার প্রোডাক্টটা ডিফরেন্ট হয়ে যায় তো ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ awareness କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ in the minds of the customers so that ଯଦି ସେ କଷ୍ଟମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୟାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବିକ୍ରି ହବ ସେଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ तो किछिटा मोनोपोली पावर रहउछि रिलेटेड टू द प्राइसिंग कारण जो प्रोडक्ट्स वन डील कोसन से प्रोडक्टटा इन सम वे और द अदर यूनिक एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंपटीशन इज पे रहउछि जेहेतु लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहउछि तो एठी मध्ये आमे देखिबा मोनोपोली जेंति शॉर्ट रन ने देखले जे आपनकर तीनटा सिचुएशन आसी पारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आसी पारे नॉर्मल प्रॉफिट आसी पारे किबा आपनकर लॉस आसी पारे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रो मध्ये से सेम कंडीशन आसी कारण हम कहले किछिटा मोनोपोली पावर एन्जॉय करूछि तावनी इक्विलिब्रियम अटेन करछि जेतले तार मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होछि तो चांसेस अछि केतोडे केस रे फार्म माने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नेबे केतोडे केस रे नॉर्मल प्रॉफिट नेबे केतोडे केस रे लॉस भी सही पाए और लॉस सहिले भी से लॉस तो से शॉर्ट रन ने सहिले एंड से लॉस तो मिनिमल बाय नेचर जोटा भी से मेकअप करिवे लॉन्ग रन ले जेतले आसीबे लॉन्ग रन माने टाइम पीरियड अधिक अछि तेनु आमे एठी को जे लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहिसंती एंट्री कंडीशन ता एथिकली कोन होछि एंट्री कंडीशन ता एठी जदियो इज नॉट फ्री बट द एंट्री कंडीशन इज सपोज्ड टू बी इजी फ्री एंट्री ना जी चाहे सी बस परिबो एना आमे कहले ना एथि यदि ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି the producer has to come out with a unique product or with a product which is supposed to be somehow different from the existing तो ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ R&D ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯୋଉ कंपनी मानकर फाइनेंशियल कंडीशन टिके बेटर अछि जो माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे पैसा खर्च करि परिबे जो माने एडवर्टाइजमेंट रे पैसा खर्च करि परिबे सेही भलिया कंपनी ए मार्केट को आसीबे तेनो एंट्री कंडीशन ता ऑल्दो नॉट फ्री बट इज सपोज्ड टू बी इजी तो लॉन्ग रन रे कोन हो ना जदी आपण प्रॉफिट नै कि जाउछंती इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंपीटिटर्स अधिक रो अधिक कंपीटिटर्स आसीबे जा फल रे आपनकर मार्केट शेयर ता अफेक्टेड हो सेटा कमी कमी आसीबो बट अल्टीमेटली गोटे स्टेज एमते आसीबो जोटी की आपण नॉर्मल प्रॉफिट जदी पाउछंती सेटा आउ नुवा कंपीटिटर को अट्रैक्ट करबो ना जे पॉइंट आपण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पाउछंती सेटा नुवा कंपीटिटर को अट्रैक्ट करिवो नुवा कंपीटिटर जदी एंट्री करूछंती मार्केट भीतर को सेटा अफेक्ट करिवो आपनकर का मार्केट शेयर जदी आपनकर कमी कमी जाउची सेटा अफेक्ट करिवो आपनकर प्रॉफिट मार्जिन तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट रे लॉन्ग रन रे आपण अल्टीमेटली सेटल हेबे विथ नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रे आपण सेटल हेबे नाही जे पॉइंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपण कमाउछंती यू आर सपोज्ड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंपीटिटर्स फॉर योर प्रोडक्ट जदी अधिक अधिक कंपीटिटर आइले ताले ऑटोमेटिकली तारो इफेक्ट ता पडिवो आपनकर मार्केट शेयर ऊपर
ଆପଣ ମାର୍କେଟ ସେୟାର କମିବ, ମାର୍କେଟ ସେୟାର କମିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ କମିବ, ସେଲ୍ସ କମିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ କମିବ, ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଲେ ପ୍ରଫିଟ କମିବ ହେଲା। ତ ଓଭରঅଲ ଏଇ ଯୋଉ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କୁ वी ऑल आर बीइंग एक्सपोज टू। ऑन द अदर हैंड जदि ऑलिगोपोली କଥା ଦେଖିବା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇଛେ ଯେ କେମିତି ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟ ରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହଉଛି and accordingly କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମଆରଏନ ଏମସି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହଉଛି accordingly କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଥିରେ ଦେଖେଇଛେ। ବଟ୍ ଅଲିଗୋପୋଲି କୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା, ଅଲିଗୋପୋଲି କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ ସେଲର୍ସ ଆର୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଟୁ ଏ फ्यू। Monopolistic competitive market में कहले large number of sellers रहुଛନ୍ତି, but all the large number of sellers are supposed to be small sellers. Small sellers माने कौन बुझुଛନ୍ତି, जो मानकर की फाइनेंशियल कैपेसिटी अति अधिक नहीं, फाइनेंशियल कैपेसिटी नॉर्मल फाइनेंशियल कैपेसिटी अति कम नहीं कि अति अधिक नहीं। किंतु ऑलिगोपोली मार्केट में कौन होती ना, नंबर ऑफ सेलर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू। एठी जेतिक सेलर रहिबे, ऑल द सेलर्स आर सपोज टू बी बिग सेलर्स, बड़ बड़ कंपनी माने रहिबे, जोटा कि मध्य हम रियल वर्ल्ड रे देखुछ। आपण यदि ए हैंडसेट कथा देखिबे कि आपनकर जो नेटवर्क प्रोवाइडर सब अछंती कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आपण हैंडफुल नंबर ऑफ कंपनीज देखिबे, जियो रहिछि, एयरटेल रहिछि, बीएसएनएल रहिछि, आ कोन जोडे 4-5 टा देखिबे, हैंडफुल नंबर, सो फ्यू नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। ଆପଣ ଯଦି फोर व्हीलर को आज प्रोडक्ट नौଛନ୍ତି, फोर व्हीलर मार्केट को जब आप स्टडी करेंगे सेठी मध्ये देखिए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, नॉट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स माने आपण गणति करबा को अधिक समय लागियो, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स माने हैंडफुल नंबर ऑफ सेलर्स, जोटा कि मैक्सिमम अप टू 15-20 नंबर ऑफ सेलर्स जाई परियो, तातो अधिक दियो। तो जेते बड़ बड़ प्रोडक्ट हम देखु, ए कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कथा किंबा आपनकर हैंडसेट इंडस्ट्री कथा कहली, किंबा फोर व्हीलर इंडस्ट्री कथा आपन देखंती, एथि बहुत लिमिटेड कंपनीज अछि, बड़ बड़ कंपनी अछि जो ने कि ऑपरेट करछन। तो सेही माने जो ऑपरेट करछन जो मार्केट रे ताको हम ऑलिगोपोली कहू। इट इज एक्सटेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ द डिफरेंस दैट द ऑलिगोपोली मार्केट इज characterized by a few number of big sellers, whereas the monopolistic competitive market is characterized by a large number of small sellers. Oligopoly market रे ऑटोमेटिकली कौन हुए ना, जेहेतु फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स रहले, चांसेस अछि तांको भितरे से माने एकाठी कोलाइड करि, एकाठी से माने ग्रुप कर दे पारबो। सपोज 5 जन सेलर अछंती, से 5 जन एकाठी मिसी जाई पारंती फॉर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। तेनु सेठी एंट्री करियाटा कष्ट, नुआ फार्म हिसाब रे जब एंट्री करिवे एटा कष्ट होई दियो, कारण यू हैव टू फाइट विथ द ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल। ग्रुप संगे फाइट करले इट इज इम्पॉसिबल ऑन योर पार्ट टू विन। तो इस जगह हम कहूचे ऑलिगोपोली मार्केट में प्राइस का डिसाइड होची बाय द group as a whole, whereby the mutual interest of all companies are being taken into consideration. आज एथि थाउ, नेक्स्ट क्लास में पढ़। अब हम बुझबे अछि सर की क्लास कर जाने हेलो सर हां सर जो प्राइसिंग अंडर मोनोपोली कहले तारा फर्स्ट पॉइंट टिके कहबे के सर आथरा प्राइसिंग अंडर मोनोपोली रे, सर प्राइसिंग फर्स्ट अंडर पॉइंट करे सिंगल हां मोनोपोली in the मार्केट long रे run हम कहूचे लॉन्ग रन रे आगे सर जो फर्स्ट पॉइंट ता कहले इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्टिक फर्म स्ट्राइव्स तापर सेटा टिके बुझी पालेनी नेटवर्क प्रॉब्लम थला से हमें कहूचे जे चांसेस अछि मोनोपोली मार्केट रे आपनकर मोनोपोली ना मोनोपोलिस्टिक कोडा कहूचे ना नहीं सर प्राइसिंग अंडर मोनोपोली तारा फर्स्ट पॉइंट जो स्लाइड रे हां अछि इन द लॉन्ग रन मोनोपोली सेटा मार्केट टिके रे सर सुनंतु, मोनोपोली मार्केट रे हमें कहले गोटे सिंगल सेलर रहउची, आमे आउरी मध्ये देखेले जे शॉर्ट रन ने जेतले सिंगल सेलर तार प्रोडक्ट डील करूची, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट कंडीशन चांस अछि से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पारे, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पारे, आ सम केसेस रे लॉस भी सही पारे। तो आमे जे कहउछले जे क्वेश्चन आसी पारे जे जदी गोटी सेलर रहउची तार के कंपटीटर नान त लॉस केन,
तो आमे कहूजे जेतले से प्राइस ता डिसाइड करिवो से कंज्यूमर रो परचेजिंग कैपेसिटी ता कंसीडरेशन में नहीं कि प्राइस डिसाइड करी तेणु मन इच्छा प्राइस आर्बिट्रारली प्राइस डिसाइड कर परिवो नाही फॉर दैट रीजन जदी मोनोपोली मार्केट रे जे सेलर रहला से किछिटा जदी लॉस होउची शॉर्ट रन में से लॉस ता तार मिनिमल बाय नेचर हबो क्वेश्चन आछि लॉस सहिले से कंटिन्यू करिवो ना करिवो आमे कहूजे जे से जो लॉस ता से सौजी सेटा शॉर्ट रन में केवल सौजी जेतले से लॉन्ग रन को मूव करिवो से लॉस को से मेकअप करी कारण से लॉस ता तार मिनिमम लॉस अछि लॉन्ग रन में से जानि छी मु प्राइस को एवडे एबे फिक्स करबी जोटी की मोर लॉस होबार चांसेस रहबो ना कारण लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली तार डिमांड बढ़ी जो माने किनुछंती से माने परसिस्ट करबी आ नुवा कस्टमर आसी तेणु से स्ट्राइक करिवो ए लॉस टाकू शॉर्ट रन रे टू मूव इनटू द लॉन्ग रन सो दैट इन द लॉन्ग रन ए लॉस टाकू से मेकअप कर दिबो बुझले आज्ञा सर थैंक यू आज एठी खाओ नेक्स्ट क्लास में देखो ओके गुड नाइट Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर गुड नाइट सर मु मु Thank you, sir. मैम को किछिटा नोट्स देथिले से पठिसंती रश्मि मैडम पठिसंती किछिटा नोट्स देथिली ना पाइना जे अपन हेलो नोट्स ग्रुप रे शेयर हेछि ना हेइ हाँ सर ହେଇଛି मु काली जाय जतक पढैथिली सेतक नोट्स आपन मु देछि विथ एग्जांपल्स देछि ताको जे पढी कारण अल्प पेज भीतर मु करछि आपन अंडरस्टैंडिंग पय मु सेतक करछि सो दैट आपन अंडरस्टैंडिंग ता क्लियर हो तो लास्ट क्लास जे जहां पढिसले अप टू कॉस्ट एनालिसिस जाय सब गुडा मु दे देछि तुम आ बाकीटा जदि हो मु आ गोटे दिन भीतर देबी ठीक है सर हो आज जोटा थैंक यू पढ़िले तो स्लाइड टा टिके शेयर करिवे ठीक है मु मैम को दे देबी मैम आपको शेयर ओके सर एटा केମିତି शेयर करबी आपन से मैम को देले करबी सर एक्चुअली जो प्राइसिंग अंडर मोनोपोली कहले से फर्स्ट पॉइंट टा मु लिखुची ना सेटा टिके टिके छाडी गेला सो सेति पई कहले से स्लाइड टा टिके आउथरे देखि कि गोटे दिटा वर्ड छाडी गेला ओहो बहुत से मु लिखुची सब नोट डाउन करची ना सर सेति पई पचाली आपन गोटे स्ट्राइप्स पर कोन लिखा है सेटा कटि जाईची एक्चुअली सर एटा शॉर्ट रन बुझिले तळका शॉर्ट रन अछि आगे शॉर्ट रन पर आगे लॉन्ग सर रन ता एटा कहउछन तो इन द आगे लॉन्ग run the हाँ सर जो लिखे monopolist हाँ firm strives and pleased to हाँ earn only profits सर प्लीज्ड हाँ pleased to earn अच्छा only profits थैंक यू सर थैंक यू सो मच